हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है भाई सब लोग का? व्हाट इज अप, व्हाट इज अप? इट इज अ नॉकआउट नाइट। मतलब मुझे क्या लगता है ना, आज आई डोंट नो, मतलब पहले ही बोल देता हूँ, प्रिडिक्शन आई जनरली कम व्हेन देयर व्हाट लिटरली 5 मिनट्स लेफ्ट फॉर द स्ट्रीम। लेकिन बिग अप टू एवरीवन जो भी लोग जुड़े हैं। एब्सोल्युटली मुझे लग रहा है आज हो सकता है, इट माइट बी अ लॉन्ग नाइट, आई डोंट नो। आई एम जस्ट सेइंग इट बिकॉज फर्स्ट लेग बायर्न हारी है। आई नो अलियांज अरीना में है एंड ऑल दैट एंड दे शुड बी फेवरेट्स, बट द टूकल फैक्टर और the Sarri factor, because me being a Chelsea fan, people would relate to that. Tuchel versus Sarri, guys. It is Tuchel versus Sarri, but obviously it is a big night for Lazio's history. मैं बोलता हूँ recent history. I think it could be a huge night. लेकिन again, जो भी लोग जुड़े, firstly, let's smash that like button. Let's have an everyone. कहाँ है भाई जनता जनार्दन, Almighty fam, what's up? आ जाइए सब लोग. Absolutely, so that we have your thoughts as to what the lineups are, क्या होने वाला है. By the way, a certain turtle is playing, of course, away to Real Sociedad, and that is also big as much as it's a 2-0 lead. और वहां पर भी we'll keep one eye. लेकिन being a Chelsea fan, by Tuchel Sarri और Tuchel का people are saying if he gets a loss, he'll get a sack even before the end of the season, जो anyway होने वाला है. तो I think it is bigger match. आप लोग बोलिए, if you disagree, we might switch. I am okay to do any watch along as much as our almighty fam अपना साथ देते हैं. भाई सब लोग आ जाइए, सब लोग. Again, whoever's here, it will help if you can hit that like button. You can share it. Again, like always, मैंने share किया in the community post as well, so that will certainly help the algorithm, so that we have in everyone in, because it's a big impact, a huge night for of course Bayern Munich and of course Thomas Tuchel and even Sarri and Lazio history recently. But this is the lineup. Are there any surprises? Harry Kane, Muller, Musiala, Sane. Of course, हमें पता ही था it'll be either of Muller या maybe Matthias Tel, and Muller is gone with the experience on a huge night. Goretzka is there, but Kimmich is not there. We all know recently वो नहीं है. Guerrero, but guys, this is interesting. It is Guerrero, not Davis, and I'll come to that. Eric Dyer. एरिक डायर स्टार्ट. भाई व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग गाइस, व्हाट इज हैपनिंग? कौन है बेंच पर, क्यों शुरू कर रहा है? कॉनराड लाइमर अगेन इज नॉट अ डिफेंडर पर से, ही इज रियली अ मिडफील्डर. लेकिन किम बेंजा ऑन द बेंच, व्हाट्स हैपनिंग? And Kimmich on the right hand side as a right back. What's happening guys? Is it the right lineup? मैं अभी सरप्राइज हो रहा हूँ. अगेन आप लोग बोलिए जो भी लोग जुड़े हैं. अगेन लाजियो पर आएंगे 1 मिनट, लेकिन लेट मी नो हु ऑल आर देयर इन द चैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, CR7 Sue in the house, Rizwan in the house. What's up? Of course UCL format. भाई रिजवान, मैं वापस से बोलता हूँ, आप एक्चुअली ऑलमाइटी ब्लूज में आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया, वो क्लियर है, क्योंकि आज कम से कम हमने 45 मिनट उस पर बात की मेरे भाई, 40 मिनट बात की है करीबन ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. वी हैड अ लवली स्ट्रीम विद पैनल एज वेल, तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा, वहां पर मेरे थॉट्स भी एब्सोल्युटली फॉर अबाउट हाफ एन आवर. लेकिन अगेन विल बी इंटरेस्टिंग टू नो गाइस योर थॉट्स. इज देयर अ इंजरी इश्यू? आई डोंट नो, मतलब मे बी आई एम रॉन्ग. अगेन नॉट गोइंग टू क्लेम कि मैं बायर्न का हर एक सेकंड देखता हूं, लेकिन जितना मुझे मालूम है किम मिन जाए वाज ओके. What is the issue? Why Kim Min Jae नहीं है बोलिएगा for sure. Again, anyone who's here, ABFC members का can message there please. Bayern will come back. Go to CR7 Sue again. Where are the other people, guys? Chat करिए. Again, doesn't take a buck. You just need to press the bell icon and you are allowed to comment, and we would love to know your comments. लेकिन again, it is very important कि यार बायर्न जल्दी गोल नहीं खाती है. As much as you would like to say that Allianz Arena में it's Bayern Munich against Lazio, you would want them to attack. But let's be real, I see that first उनको रखना है अपना structure, and then obviously they will gain the confidence, which for even Bayern standard, they have lost it recently in my opinion. I don't know if you agree with that. नहीं? अच्छा एक सेकंड, मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ. आई डोंट नो गाइस, इज दैट ओके? यू वांट फुल स्क्रीन और यू वांट बैकग्राउंड? लेट मी नो व्हाटएवर यू से जनता जनार्दन इन द हाउस. और मैंने दो थंबनेल बना दिया आज, तो होपफुली विल हैव your feedback there as well. I will definitely check it out. Yes, no problem Rizwan, no problem at all. Thomas Tuchel needs Chelsea and Chelsea needs Tuchel. Maybe I don't know. मतलब वो दुश्मनी निकाल रहा है क्या बायर्न म्यूनिख से? क्या the fact that he was treated harshly despite injuries, although even he did not do great, वो भी फैक्ट है थोड़ा बहुत. बट इट्स इंटरेस्टिंग टू नो. एक सेकेंड में दीजिए. बैकग्राउंड चाहिए, चलो बैकग्राउंड डाल देते हैं. चलो व्हाई नॉट, विल पुट अ बैकग्राउंड अगर आप चाहते हो तो. दैट इज व्हाट विल डू रिजवान, एंड दैट इज व्हाई इट्स एन ऑलमाइटी फैम ब्रो. विल लिसन टू यू एज मच एज यू थिंक इट्स वर्थ इट फॉर श्योर. एक सेकेंड, मैं चेंज कर दिया भाई, देखो. बेटर लुकिंग बेटर, ठीक है. तो अभी दिस इज अ प्रॉपर यूसीएल बैकग्राउंड. आ जाइए सब लोग. अगेन हिट दैट बेल आइकॉन ऑन द स्ट्रीम as well as the
community post that certainly helps. लेकिन अगेन हमने देखना है व्हाट इज अप. अगेन रिमेंबर, हो सकता है दैट दे माइट जस्ट डिसाइड, आई डोंट नो, मतलब आई माइट बी रॉन्ग. Pavlovic, जहां तक मुझे मालूम है, he's a midfielder, but I don't know because he's a youngster, 19-year-old. Will Tuchel expect him to come in the back three with Eric Dyer, De Ligt? ये भी हो सकता है. Knowing Tuchel, क्या tactically he might change something. He might all of a sudden play by Guerrero, Goretzka और Kimmich in midfield. It might be a 3-3-3-1. जैसे Eric Dyer, De Ligt, Pavlovic with Guerrero, Goretzka, Kimmich, and Musiala, Muller, Sane. 3-3-3 और केन अप टॉप. ये भी हो सकता है क्वाइट पॉसिबली. या इफ यू वांट विट, बिकॉज लाजियो अगेंस्ट एसी मिलान, इफ एनीवन हैज वॉच्ड, वहां पर पेलेग्रिनी वाज बीटन एंड ही गॉट अ रेड कार्ड. तो हो सकता है दे माइट वांट टू टेक हिम ऑन और साने ज्यादा वाइड रहे और किमिक ज्यादा वाइड रहा. आई डोंट नो, बोलेगा फॉर श्योर. लेकिन अगेन लाजियो का मिडफील्ड में वेचिनो है भाई, प्रॉपर बॉल विनर है, और गेंडूजी है ऑफ कोर्स, अ बॉल प्लेयर इज वेल इन माय ओपिनियन. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली भाई. नोटिफिकेशन आई ना सब लोग को? आई होप that everyone get the notification. Let me know. Or you think this thumbnail is not good, should I change the thumbnail? I'm just wondering already. Let me know guys. Almighty Sportsman इस टाइप का thumbnail first time use कर रहा, तो any feedback would be appreciated 100% as always. लेकिन अच्छा, मैं एक सेकेंड. ओके, लेट मी जस्ट मैसेज इन द ग्रुप एज वेल. आई थिंक सब लोग सो गए. आई थिंक काफी सारे चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आर नॉट हैप्पी यूसीएल नॉकआउट नाइट में नहीं देखकर. आई नो दैट, एज वेल एज लिवरपूल अभी के लिए तो. लेकिन ओके, एक सेकेंड, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट ठीक है. आई थिंक द सेटिंग्स आर फाइन. अगेन आई हैव मेंशन इन द community post as well. If you guys can share it, it'll be brilliant. Even on Twitter, or like कर दीजिए stream. Again, चलो, Rizwan has confirmed that he got it, so that's good. But Real Sociedad PSG का क्या हो रहा है? Again guys, 9 minutes left to the matches to begin. Remember, आज quarter finals पता चल जाएगा भाई, 2 quarter finalists कौन है. Of course, before the last knockout rounds in the old format is this guys. The last knockout rounds in old format. तो कहीं ना कहीं अगेन, मतलब न्यू फॉर्मेट में भी नॉकआउट राउंड्स तो नॉट टू डिसिमिलर होगा, बट यू नो व्हाट आई मीन, राइट? भाई साहब, रियल सोसिएडाड क्या कर रही है भाई? 4-4-2 जा रही है. ये क्या हो गया? व्हाट इज अप विद देम? व्हाई इज दैट? मतलब अगेंस्ट द पेस वो बीट नहीं होना चाहते. डेम्बेले अगेंस्ट बेकर एंड गालान, वेयर इज द राइट हैंड ट्रायोरे और मेंडेज अगेंस्ट बारकोला, जो बहुत ही अच्छा था इन द फर्स्ट लेग. ऑफ कोर्स मेंडेस इज बैक, रिमेंबर, लेफ्ट बैक ऑफ पीएसजी, जो काफी समय तक इंजर्ड थे. बट ओयारज़ाबाल एंड कुबो इंटरेस्टिंगली फॉर्म द फ्रंट टू विद बेसिकली आंड्रे सिल्वा ऑन द बेंच. आप लोगों को क्या लगता है गाइज? कहीं ना कहीं दे आर लाइक, एक भी गोल कंसीड नहीं करना, एक गोल कंसीड किया तो बस खत्म. तो दे आर एक्चुअली इवन मोर डिफेंसिव देन बायर्न म्यूनिख बिग टाइम, क्वाइट ऑब्वियसली, ऑलमोस्ट लाइक लाजियो. लेकिन PSG on the other hand, Mbappe, bhai, a certain turtle starts despite leaving in the summer. Obviously, PSG ideally would want him to win the Champions League, finally. जब तक वो है, फिर बाद में देखा जाएगा. लेकिन अगेन सेंटर हाफ पार्टनरशिप इज इंटरेस्टिंग. ऑन द बेंच Gonzalo Ramos है, कोलो मुआनी है, सोलर है, कैंगनली है, उगाटे इज ऑन द बेंच. गाइस, इंटरेस्टिंग. तो फैबियो रूइज स्टार्ट्स एंड नॉट उगाटे भाई इतना रो के लिए थे भाई, हमसे क्या हो गया? Tuchel gets sacked early if he loses today as well. Yes, लेकिन हम भाई, are we all Tuchel भाई? Where is the जनता जनार्दन? Tell me guys, Tuchel और सारी, ये बोलिए, Tuchel और सारी, even neutrals, let me know. Do you want Bayern Munich to win or do you want of course Lazio to win? हाँ, अगर आप हो एक मैन सिटी या रियल मैड्रिड फैन और मे बी एन इंटर मिलान फैन, मे बी इवन आर्सेनल फैन, आप चाहोगे कि बायर्न म्यूनिख हारे. विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू लाजियो, आई डोंट नो इफ यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. 16 को आर्सेनल का मैच है और बोर्ड 12 को खत्म हो जाएंगे. आई विल बी देयर विद यू. बिल्कुल, नो प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट गाइस, स्टडी वेल. लेकिन आप अगेन प्रेडिक्शंस हो जाए भाई. 6 minutes लेफ्ट टू किक ऑफ. एवरीवन, इट इज प्रेडिक्शन टाइम और मुझे पूरा प्रेडिक्शन चाहिए गाइस. हाँ, मुझे शायद पता है क्यों लोग नहीं आ रहे. शुड आई चेंज द थंबनेल गाइस? लेट मी नो. पुदिन को मैंने दिखाया था थंबनेल, बट डू यू वांट अ थंबनेल व्हिच हैज Mbappe as well? Do you think that will work better? I don't know. मतलब आप लोग फीडबैक दीजिए.
मेरे पास दो थंबनेल है, मैं एक्चुअली दिखा भी सकता हूँ आप लोग को। आई एक्चुअली हैव टू थंबनेल्स। वन इज जो आप दिख रहा है व्हाइल यू गिव द प्रेडिक्शंस, लेकिन दो तरह के थंबनेल्स है, मतलब ओल्ड टाइप और न्यू टाइप दोनों है। ओल्ड टाइप में मैंने एम्बापे को डाला है, लेकिन वो डिफरेंस है। शुड आई पुट दिस, शुड आई चेंज द थंबनेल टू दिस वन, देन लेट मी नो। सब लोग अगर कोई फीडबैक दे दी तो बढ़िया बढ़िया रहेगा। अगेन गाइज, एनीवन हु इज वाचिंग हु इज नॉट सब्सक्राइब डजंट टेक अ बक, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बोलिए, आपका है प्लेटफॉर्म यहाँ पर, हम सुनते हैं भाई। और एट द एंड ऑफ द डे जस्ट वाचिंग यूसीएल फॉर अबाउट 25 इयर्स एंड वी विल कंटिन्यू, बिकॉज कीड़ा है तो हमें देखना ही था। आपके साथ देखे तो और भी अच्छा लगता है। आप लोग बोलिए, जो थंबनेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो बेटर है कि जो थंबनेल आपको दिख रहा है अभी जो वीडियो में वो बेटर है? Please give me feedback. I want that feedback. It'll help me. Certainly, I made two thumbnails, so hopefully we can use that. कोई भी हो, कोई भी गरीबों को दे दो फीडबैक, कोई नहीं, बिग अप टू यू एब्सोल्युटली। अगर आपको शर्म आ रही है टू सब्सक्राइब एंड कमेंट, दैट्स नो प्रॉब्लम, आई रेस्पेक्ट दैट एंड आई नीड टू रेस्पेक्ट दैट फॉर श्योर। ऑलवेज वेलकम, यू नो दैट। लेकिन कमिंग टू दी प्रेडिक्शन, सब लोग प्रेडिक्शंस बोलिएगा 100%। What about the predictions, guys? I am going with. I don't know. I am going with. Again, मैं चाहूंगा नहीं. I don't want such a long night. But मुझे लगता है, as much as Bayern Munich are obvious favorites, I still feel, mistakes are coming. तो I am saying यहाँ पर Bayern Munich 2, Lazio 1. तो all of a sudden वो हो जाएगा 2-2 and then it goes to extra time and then Bayern Munich score. That is मेरा prediction and they go through at Allianz Arena और वो थोड़ा advantage होगा उनको in extra time, which has not happened since last year and a half if I'm not wrong in UCL knockouts. लेकिन what about Real Sociedad and PSG? Real Sociedad and PSG 0-2 है, वहां पर मुझे लग रहा है it'll be only a one-sided affair. I don't see any difference there. बोलेगा चलो लाइव टू टी लर्न बोले इट विल वर्क, चलो हम कर देते हैं वो, अगर आप बोल रहे हो तो ट्राई कर लेते हैं भाई। लेट मी सी अगेन, एनीवन हियर हु थिंक्स अदरवाइज फील फ्री टू डेफिनेटली लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक इट इज। बट अगेन हुएवर इज हियर, आप लोग प्रेडिक्शन दीजिएगा। आई वुड से दैट पीएसजी माइट गेट अ ड्रॉ और इन एग्रीगेट दे विल गो थ्रू। तो कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ एग्रीगेट ड्रॉ इन नॉर्मल टाइम फॉर बायर्न म्यूनिख against Lazio, and I am saying aggregate win for PSG in normal time, लेकिन extra time में Bayern Munich winner, although we don't want to stay so long, do we? लेकिन हाँ, again Sarri ball work against Tuchel. To be honest, tactically, why not? Why not? It can. लेकिन I don't think he should play Sarri ball. हाँ, अगर जल्दी गोल आ जाता तो और भी बेटर है, एब्सोल्युटली। लेकिन मैं पर्सनल ओपिनियन, इट माइट बी अदर वे अराउंड, आई डोंट नो। आप लोग बोलिएगा। चलो मैं डाल देता हूँ, दोनों ही मैचेस डाल देता हूँ गाइस, आई थिंक दैट इज बेटर। 3 मिनट लेफ्ट है फॉर किक ऑफ। अगेन हम लोग लाइनअप देख लिए। अब मैंने शायद चेंज किया है थंबनेल, आई गेस, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट। आई हैव चेंज्ड द थंबनेल, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, लेकिन लेट्स गो विद इट फॉर सम मिनट्स एंड सी, बिकॉज आई वाज होपिंग टू हैव मोर पीपल इन, एटलीस्ट ऑलमाइटी स्पोर्ट्स वाले हो यार, फुटबॉल वॉचर्स। आई नो इट्स क्रिकेट भी वी डू मोर, बट वी डू फुटबॉल इज वेल हियर, क्या बात है। I think I've shared in the community as well. I definitely have. If you can give that like button in the community post, वो help करता है to just kind of help the reach. लेकिन कोई नहीं, no problem at all. और the Champions League anthem on a knockout looks different, guys. It totally looks different, नहीं क्या? बिल्कुल। लेकिन हाँ, again लाइनअप देखिएगा, रियल मैड्रिड पीएसजी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। व्हाट कैन बेसिकली रियल सोसिएडाड, रियल मैड्रिड बोल दिया, रियल सोसिएडाड बेसिकली व्हाट कैन यू डू, बिकॉज फॉर मी अगर वहां पर रिजल्ट आता था, इट विल बी द रिजल्ट ऑफ द राउंड ऑलमोस्ट, राइट? ऑफ कोर्स Zubimendi didn't have such a great game in the first leg, although Real Sociedad इतना बुरा भी नहीं खेली थी for sure. They didn't deserve like a 2-0, मेरे ख्याल से deserve like a 2-1 loss maybe at best. लेकिन that's football, right? और Barcola was brilliant and Mbappe as well scored if I remember right. लेकिन again on the bench change करने के लिए PSG के पास ज्यादा है, तो I don't see Real Sociedad changing it. I know Andre Silva है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि स्पार्क लाता है in terms of creating something out of nothing, which probably Kanginli for example has थोड़ा बहुत. That's the difference. But on the other hand, again Bayern Munich versus Lazio, what about that? No problem, no problem.
I'm just saying community post में guys likes काफी कम है. Likes में कंजूसी नहीं करने का, आधी रात हुआ है, especially people watching in Asia. But come on, we can do better. We can do better on the likes as well if anyone is here. But I am just looking at Bayern Lazio again, the lineup, and making sure. Guys, what is it? Davis, is he injured or what? What is Kim Min Jae doing? मतलब हाँ, Davis is there on the bench. I can see Davis on the bench. Gnabry, by the way, is back on the bench. That's good for Bayern Munich. आई थिंक थोड़ा बहुत सेफ खेल रहा है यार टुकल. मतलब ही इज गोइंग विद द फैक्ट दैट we'll try and keep it tight and get one on with a quality. I don't know if it's the right approach by Tuchel. I really don't know, क्योंकि गेंडूजी और वेचिनो है वहां पर. I don't think it will work. मुजाहिद भाई तो बोल रहे भाई Bayern and PSG will go through. I don't know. Again guys, anyone who's watching, मुजाहिद भाई आप ज्वाइन किया अभी तो आप लोग भी बोलिएगा यार. 2 थंबनेल है भाई हमारे पास. If anyone can give me feedback, please give us feedback. I would love that feedback. This is the thumbnail that you're watching, which I have currently put. But एक और thumbnail है, ये एक thumbnail है. Let me know which one is better, the one with Mbappe और थोड़ा ज्यादा लोग हैं उसमें thumbnail में, और the other one. Let me know, please. That feedback will help, of course. यहाँ पर मैच शुरू होने वाला है. Meanwhile, let's actually make sure that अपना ready है. स्टॉप वॉच. चलो भाई शुरू हो गया. कम ऑन गाइस. थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है मेरा स्टॉप वॉच. भाई 10 सेकंड ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है? 10 सेकंड ऐड कर लेना. हर्षा इन द हाउस, बिग अप अगेन. हर्षा, मुजाहिद, हार्दिक. Live to learn has already said it, but let me know is this better? Should I put this one or the other one? Let me know. Quick feedback guys on the comment section. I need, please. Where Bayern looks like 3 the back लग रहा है यार, at least build up में. मतलब ऐसे हमने anticipate तो किया था, but I think again Rafael Guerrero will kind of go up front. Barca Universal in the house again. Let us know which thumbnail is better, the one with only Kane and Immobile. Both managers possibly having the last game day today. Fair enough in terms of UCL. Hardik, absolutely. At least for the timing. Musiala on the right hand side. Getting Kimmich getting in. Oh, भाई क्रॉस आया, लेकिन I don't think Muller को take it. और लाजियो का पैड आया बीच में, और I think counter आएगा. Wow. Anderson on the right hand side. Let's see what they do. Can they make it work? Lazio. और भाई counter आया, but heavy touch. Just about. I think Bayern have got it यार. Just about बच गए. Mbappe and one Sociedad player. Add Mbappe on top of this image. नहीं यार अभी नहीं कर सकते. Basically I need a different thing for that, so I don't. But कोई नहीं. The one with Kane Immobile. चलो आप मुजाहिद बोल रहे हैं ये डालिए. चलो. I think even I agree that is a better quality, but in terms of I get what Harsha is trying to say as well as Pudin. But कोई नहीं. Again guys, always a fan channel for to see. If you can like, share, subscribe, great. Share कर दीजिए. लेकिन again कोई देख रहा है PSG वाला मैच? Which match are you watching? Everyone do let me know. कौन सा मैच देख रहे हैं? Which match are you watching? Again I am focusing on Bayern versus Lazio, but we'll keep an eye on the other one. Absolutely, क्योंकि वहाँ 2 goal lead है, plus यहाँ पर Tuchel सारी है. मतलब being a Chelsea boy myself, so that is the reason, of course. और कहीं ना कहीं it's very important for both the clubs in my opinion. I don't know. आप लोग बोलिए. Bayern game. Harsha is watching the Bayern game. Again, others are watching. भाई सब्सक्राइब करिए. Do subscribe. Any part of the world you're welcome. Absolutely free of cost. I don't know what was the hesitancy, but it's okay. I have to respect that. I get that. Bayern keeping possession meanwhile. चलो लास्ट टाइम मैं चेंज करो थंबनेल. आई एम पुटिंग अ सिंपल थंबनेल नाउ, ठीक है? बायर्न वर्सेस लाजियो कोबरा भी. चलो सब लोग बायर्न लाजियो देख रहे हैं जो देखने वाले, तो थंबनेल भी उसका ही कर लिया खाली, ठीक है? लेट्स फोकस ऑन दैट. लेकिन विल ट्राई एंड कीप एन आई ऑफ कोर्स दूसरा मैच में. एनीवन इन द चैट है जो रियल सोसिएडाड पीएसजी देख रहा है, और मे बी यू आर कीपिंग बोथ द थिंग्स ओपन फॉर ऑल वी नो. मतलब आई ऑलवेज यूज्ड टू डू दैट. अनिमेश इन द हाउस. व्हाट्सअप अनिमेश, व्हाट्सअप, क्या हाल है? व्हाट्स योर फीडबैक यार? ओम आपका भी फीडबैक दीजिए. क्या हाल है? अगेन Chelsea X-Managed Derby. बिल्कुल बैन. And we are all Tuchel, aren't we? As much as Sarri को भी respect है, लेकिन Kimmich का cross, second ball won by Sane. Kimmich keeps the possession. Pavlovic doing well. Goretzka, what does he do? Does he
put a high ball on the far post? No, he doesn't. यहाँ पर वापस मुसियाला का होता है मिडफील्ड में जो ड्रॉप करता है. लेफ्ट विंग में यहाँ पर गुरेरो के पास है. गुरेरो लो क्रॉस. Oh my God, Kane was almost there, but just about in front of the ball, guys. Already by a lot of things happening in the game. Lazio को एक काउंटर में हाफ चांस मिला है, you can argue, and Kimmich has already put 2 अच्छे deliveries on the into the box. किस चीज का फीडबैक भैया? I wanted to see, मतलब दो थंबनेल बनाए थे. I wanted you to tell me which thumbnail was better. अभी जो वीडियो में आपको दिख रही है, the one with only this match, that is Bayern Lazio, or the one which I had put earlier. मैं वापस से दिखा भी सकता हूँ. The one that you are seeing on the video already, you can see if you refresh. वो तो है खाली Immobile और Kane उसमें, लेकिन दूसरा वाला is what I would want you to tell me if possible. If you like that, I'll change that. मतलब again, main ज़्यादा लोग भी बोले, but can't remember the last time Bayern Munich being the shit in UCL. I do Man City fan. I remember they had a game. Was it against Liverpool? The season जब Liverpool जीती थी, right? Pretty sure. उस समय कोवैच था. They were really bad, यार. They were really bad. इतना ड्रॉस हुआ था ना वो वाला round of 16. मतलब it was so easy, man. Liverpool won at a canter. If I'm not wrong, Alonso उस समय Bayern Munich में था, by the way. अरे लाजियो का चांस बाय गेंडूजी, शॉट जस्ट वाइड, by the way. ये बोलिए, ये वाला स्क्रीन पे जो दिख रहा है, या the one which I've used on the thing. ठीक है. ओम मुजाहिद लू लेट मी नो. विलारिया से भी बाहर हुए थे बायन. हाँ, वो कैसे भूल सकता हूँ भाई मुजाहिद. एब्सोल्युटली भाई, बिग अप. 100% वो भी कैसे भूल सकते हैं, ऑफ कोर्स. लेकिन हाँ, देयर वर लॉट ऑफ गेम्स जहां पर क्लोज भी था. आई रिमेंबर पास्ट ईयर्स में देव हैड सम वेरी क्लोज नॉकआउट गेम्स. एट द सेम टाइम कुछ गेम में बहुत डोमिनेट किया, स्पेशली इन राउंड ऑफ 16. आई रिमेंबर द गेम अगेंस्ट चेल्सी, ऑफ कोर्स, हु कैन फॉरगेट. लॉकडाउन, Andreas Christensen was there, I remember. बारसा यूनिवर्सल ऑलरेडी शुरू हो गया है. अरे शॉट आया है फ्रॉम द लेफ्ट राइट हैंड साइड फ्रॉम साने. बारसा यूनिवर्सल नॉट श्योर व्हाट. ऑलरेडी आई हैव पुट 3 शॉट्स ब्रो. ऑलरेडी आई हैव पुट 3 शॉट्स इन द लास्ट 4-5 days. आई पुट 3 शॉट्स. आप चेक कर सकते हो बारसा यूनिवर्सल. अगेन आपको नोटिफिकेशन तब आएगी जब आप लाइक करोगे. हमारे हर एक वीडियो में लाइक करोगे ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आएगी, इंक्लूडिंग द शॉट्स. दैट इज that is how it is done in shorts. You don't get a notification per se, लेकिन like कर दीजिए और automatically आपको बोल दिया जाएगा. This वाला कौन सा, मतलब I don't know which this. अरे भाई एक सेकेंड, काउंटर पे लाजियो का गोल आने वाला है. in the box they clear it Bayern just about, but I'm not clear which one you mean. मैंने दोनों दिखाया था क्या? Anyway, Bayern were struggling in UCL after robbery era. उसके बाद they came back and Hansi Flick era. fair point that. अभी वाला अच्छा लगा मुझे तो. चलो, अनिमेश ने तो क्लियरली बोल दिया जो अभी लगा है, with only the Bayern and Lazio match and myself thinking. That's one. दूसरा वाला दिखाना एक बार. चलो एक और बार दिखा देते हैं while we watch the match. And guys, again, जो भी लोग देख रहे हैं, do not forget to hit that like, but subscribe if you new. Guys, we are very close to 5K. Come on, let's get to 5K भाई. इस महीने चलना ही है अपने को 5K यहाँ पर, और 12K on Almighty Blues. साने का अटैक आ रहा है into the box. Is it tripped? भाई, was it tripped? नहीं, कॉर्नर दिया. I don't think it was tripped, and I think fair point. Big up to the referee. कोई भी रेफरी अगर प्रेशर में आता तो इजीली शायद चेंज करता. I don't know. Maybe I'm wrong, but it is what it is sometimes, you know. हाँ भाई, अब मैं देखो लाइन से दिखाऊंगा दोनों. लास्ट टाइम, थर्ड एंड लास्ट टाइम मैं दिखा रहा हूँ दोनों थंबनेल एज बायर्न टेक द कॉर्नर. ठीक है, 2 थंबनेल है, दोनों दिखाने वाला हूँ. पहला, नंबर 1 स्टैंड्स फॉर बोथ द मैचेस. नंबर 1 स्टैंड्स फॉर बोथ द मैचेस. दिस इज द थंबनेल. आई विल कीप इट फॉर अबाउट 10 seconds ऑन स्क्रीन. यू वांट रेट दिस थंबनेल? ठीक है, नंबर 1 10 seconds के लिए रख रहा हूँ. ये नंबर 1 है जो एवरी बोथ द मैच. और नंबर 2 एज बायर्न टेक द कॉर्नर. अरे भाई, लीपिंग हेडर बट वाइड. नो प्रॉब्लम. एरिक डायर देयर भाई. एरिक डायर का ओनली प्लस पॉइंट यही है. लेकिन किम मिन जाए क्यों नहीं है भाई? अल्फोंसो डेविस क्यों नहीं है? आई डोंट नो. ये है दूसरा नंबर 2 तो नहीं बोलूंगा. हार्दिक लाइक्स द फर्स्ट वन. आई बिलीव अनिमेश लाइक्स द फर्स्ट वन. अनिमेश लाइक्स द सेकंड वन. अच्छा, सेकंड वाला ये है. अब बोलिए, ये सेकंड वाला है. यू वांट put 2 or 1 in the chat. Simple. 2 is which has 1 match, 1 is which has 2 matches. ओम को लगता है फर्स्ट वाला अच्छा है.
हार्दिक को लगता है फर्स्ट वाला अच्छा है, अनिमेश को लगता है सेकंड वाला अच्छा है, बारसा यूनिवर्सल भी फर्स्ट वाला बोल रहा हूँ, अरे बाप रे, चलो दिस इज गुड फीडबैक, गुड फीडबैक. Looks more attractive. First thumbnail 8, second thumbnail 9.5. हर्षा, हर्षा निमेश बोल रहे सेकंड वाला. भाई कहीं ना कहीं टाई है दोनों का. एनी टाई ब्रेकर्स, एक काम करेंगे, विल ट्राई एंड चेंज इट मिडवे, ठीक है, वो करेंगे. लेट दिस बी, और आराम से मैच देखते फॉर अबाउट few more minutes and then we'll change it. Like, big up to everyone giving the feedback. Barcelona yourself, Om, Harsha, Animesh, Pudin, मैनचेस्टर सिटी फैन आपने दिया नहीं है रेटिंग बाय द वे. कोबरा एज वेल, मुजाहिद भाई, कम ऑन. Bayern keeping possession, भाई don't tell me it'll be a KG game यार. Lazio would want it to be KG game. Real Sociedad Paris Saint-Germain कैसे चल रहा है, वहां भी 0-0 गाइस, जस्ट सो यू नो. कोई नहीं. सेकंड मुजाहिद भाई एंड कोबरा आर आल्सो गोइंग सेकंड. तो भाई सेकंड इज जस्ट लीडिंग, तो वी आर कीपिंग दैट, अभी तक चेंज नहीं कर रहे. लेकिन अगेन यहाँ पर लाजियो का शॉट आया है, वो एंडरसन ऑन द राइट हैंड साइड गिविंग टू समवन गेंडूजी. सर्टेन आर्सेनल एंड मार्से फैंस रिमेंबर, ऑलरेडी नाटक करते हुए थोड़ा बहुत मुसियाला ने थोड़ा सा साइड टच किया और गेंडूजी गिर गया जैसे कि भूकंप आया है. डेविड लुइस वाइप देता हुआ गेंडूजी. भाई डेविड लुइस, एवरीवन रिमेंबर्स द ओजीज. Would you want Tuchel back at Chelsea? Om, I would bite your hand off. You're, मतलब again, I'm a vibes wala banda. Om, you know me. You're an OG of the channel as well. Everyone here who watched us know that. मतलब as much as tactics are important, as much as man management is important, and yes, Tuchel के पास गलतियां है, for sure बहुत है. लेकिन for everyone who's easily forgotten the fact that the guy in his first half season at Chelsea was a Champions League winner. ठीक है, he following season he took us to the Carabao Cup final. First season में he took us to the FA Cup final. By what not? Of course, FA Cup final पूरा क्रेडिट उसको नहीं जाता है, same as UCL. लेकिन again, what about the following cup, FA Cup final as well? यहाँ पर कॉर्नर दिया भाई बायर्न म्यूनिक ने. Bayern Munich has conceded, and of course Club World Cup, which we have struggled in the past, and of course back-to-back season with top 4 लाना. I think it is not too bad, as much as problems definitely थे in terms of थोड़ा सा ज्यादा negative football, थोड़ा सा मतलब बंदों को नाखुश करना in terms of pure wingers and attackers. I get that totally, but again मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि watch out, unlike many. आज तो भाई माता आ गई सोशल मीडिया को, especially Chelsea social media. All what they are discussing is only Amorim or Deserbi. भाई seriously man, और कोई काम दाम है नहीं क्या आपको? मतलब हम भी करेंगे when it's time for sure, maybe in a couple of days for all we know. लेकिन कोई नहीं. Do you think Guerrero can replace Jordi Alba? Looks so similar. Not really, I don't think so. I don't rate Guerrero. मतलब he's improved, don't get me wrong, Pudin, but मैं उसको rate नहीं करता defensively as good as Jordi Alba. Again, Jordi Alba was more of an attacking fullback, लेकिन he was a proper fullback. He's almost like, मतलब not as good as Ashley Cole, I must say. Sorry, Barca fans, it is what it is. लेकिन he's very close. I must say. For me, Jordi Alba can do both the things very well. Rafael Guerrero has improved defensively, but still there are issues. I think more of a wing back लगता है मुझे. यहाँ पर साने कमिंग इन मिडफील्ड, लेकिन 4 बंदे भाई लाजियो के ब्लॉक करते हुए. गेंडूजी ऑन द काउंटर, देखते हैं if he can get the counter. No. Well done by Bayern Munich, but he beats his man, guys. What is a brilliant turn by Guerrero. Sorry, Guerrero बोल दिया, Guendouzi. But यहाँ पर they have beaten. Pavlovic doing well, guys. Pavlovic is a young DM of Bayern Munich. बहुत impress किया है last month में, in my personal opinion. Okay, even the 2021 season was pretty great. Exactly. How you rate Sarri's time at Chelsea? No vibes, guys. Cobra, I'm sorry. But again, उसकी गलती नहीं थी. केपा को ज्यादा फॉल्ट देना पड़ेगा. That he had the audacity to tell him no. I know वो miscommunication हो गया या lost in translation हो गया था Carabao Cup final में against Man City. And I know he took us to Man City versus Chelsea Carabao Cup final and won us the Europa League. और लीग में भी काफी दिनों तक अच्छा किया था, बट लेट्स बी रियल, दो 6-0 लॉस टू मैन सिटी एंड थिंग्स लाइक दैट, आई कैन नॉट फॉरगेट यार. कम ऑन, मतलब बहुत ही, मतलब बाकली को लाना हर एक 65th मिनट में, मतलब पॉच वाइब जो देता है ना वैसे वाइब्स देता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट लाइक टुकल आप एसोसिएट करते हो. टुकल, कॉन्टे, जोजे. यहाँ पर एक कॉर्नर है बाय द वे मीनवाइल बायर्न म्यूनिख के लिए. टोटली अग्रीड बाय विद अनिमेश. रिप्लेसमेंट तो बुस्केट्स का चाहिए. रॉड्री मिलेगा नहीं आपको अभी के लिए. एशली को लिया, थैंक यू मैन फॉर कंफर्मिंग दैट. नहीं यार, कुछ लोग माइट गेट ऑफेंडेड, दैट्स ऑल, बिकॉज बोथ आर लेजेंड्स इन देयर ओन राइट. लेकिन हाँ, एशली को, लेट्स बी रियल, मतलब फॉर मी
मतलब people might say even Roberto Carlos and people might say I'm deluded. मैं तो इतना बड़ा statement बोल रहा हूँ that even more than Roberto Carlos I would pick Ashley Cole, and I've seen the peak of Roberto Carlos. Attacking wise, free kick was brilliant. Defensively also he was very good. Ashley Cole as an all rounder. Musiala shot और भाई brilliant save. Of course कौन save किया भाई, बंदा जो score किया था in the early rounds of the Champions League, Proudel, I believe in the goal of Lazio, लेकिन directly to goal था. सा ने छक्का मार दिया meanwhile rebound से. Kimmich at right back. Why? Because apparently Om they are playing wanting to play attacking football. Lekin more importantly, Om, I don't know why is Eric Dyer there. I don't know about that. Maybe height, maybe physicality. Lekin Kim Min-jae ka injured. I don't know. Anyone can update me. Why is Kim Min-jae not starting? Have I missed something? Upamecano नहीं है तो किम मिन जाए का होना और भी अनिवार्य था यार. आई एम वेरी शॉक विद दैट. आई माइट बी रॉन्ग. आई माइट हैव मिस्ड द न्यूज. क्या वो मतलब एक निगल रख रहा है? आई डोंट नो. और इवन डेविस. Yeah, Sarri was not bad, Hardik. But the thing is, I didn't see him as like a top manager. Simple as that. I'll be very honest. मतलब एक लॉन्ग टर्म मैनेजर जो चेल्सी फैन से एसोसिएट कितना, मतलब देयर वर सम कॉबम सेक्सुअल्स हु रियली लव्ड हिम. आई नो द सारी सेक्सुअल्स, बट टू बी ऑनेस्ट या तो हम बहुत अच्छा खेलते थे या तो एकदम बेकार खेलते थे. सारी वाज दैट, यू नो. कहीं ना कहीं डिजर्बी जो लिंक हो रहा है, ही इज द सेम. सो आई डोंट सी दैट दे प्लेज गुड फुटबॉल, बट डिफेंसिवली देयर आर इश्यूज इन माय पर्सनल ओपिनियन. आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग. किमिंजा इंजर्ड था ना, लेकिन आई थॉट ही वाज फिट फॉर दिस गेम यार. मतलब हमने प्रीव्यू में बताई था शाम को, बट कोई नहीं. इस टेनाज लैंग्वेज, इट्स इन टेना टेनाज लैंग्वेज इज टैक्टिकल. Good one, Animesh. Good one. I know. I totally understand, bro. The pain. I totally understand the pain. ठीक है. Hazard, Costa, Pedro, Fabry. What is that about? अच्छा, मतलब you're talking about 2018 Chelsea. Fabregas, Pedro. Is that what you're trying to say? पता नहीं. यहाँ पर they are keeping possession in the box. Musiala, Guerrero cross. अरे no! तो कम ऑन. मुलर आगे चल गया भाई, मुलर के पीछे रह गई बॉल भाई. Brilliant 1-2 on the left hand side, inside the box, on the edge of the box rather, between Guerrero, left back of Bayern Munich, and Musiala. लेकिन केन एंड मुलर थे बॉक्स में. हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा आगे रह गया यार मुलर. मिडिल सॉफ्ट कॉर्नर है, नेवर लाइक बारसा, बट एट दिस टाइम इवन आई एम फीलिंग सॉरी फॉर बारसा इंजरीज. एब्सोल्युटली. Ooh, short and wide Kane का, I believe corner है. Nice one. Come on, man. Are we all Bayern tonight or Lazio? भाई, I am Bayern, although not a Bayern fan per se, लेकिन चैंपियंस लीग में Bayern रहना चाहिए यार, और प्लस Tuchel का जॉब रहना चाहिए. as much as you know, I don't mind him at Chelsea, जो होने नहीं वाला. According to Tuchel, भैया Kim Min-jae and De Ligt can't play together because he needs a ball playing. हाँ, ये बोला था. But then nice man, chat op यार. क्या हो रहा है? What is happening with the referee, man? Don't tell me. मैं तो जब ये है क्या, कुछ तो सिटी नहीं बज रही उसकी. कोई नहीं. पूरा पाक कर दो बस. जीके बोल रहे भाई, जीके चाह रहे कि लाजियो जीते. 6-0 भी सारी कैन रो था. बिल्कुल. दैट्स व्हाई आई एम नॉट लाइक अ ह्यूज सारी फैन, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. इतना प्लेन टर्म से बोल रहा हूँ. आई लाइक सारी, आई लाइक द मैन, आई लाइक द वे दैट वो मैनेज करता था टीम एक्सेट्रा. जनरली मतलब इतने ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होते थे. एट द सेम टाइम प्ले सम नाइस फुटबॉल, लेकिन कुछ ज्यादा ही पासिंग होती थी. वहीं से पिक किए थे हम लोग. वो पासिंग टू डेथ यार. आई डोंट लाइक दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय. आई वांट मोर ऑफ क्विक पासिंग, वन टच फुटबॉल, वन टूज, ट्रायंगल्स, काउंटर. वैसा ज्यादा अच्छा लगता है पर्सनली स्पीकिंग. नथिंग गुड और बैड अबाउट इट. और नाइस इंटरसेप्शन बाय लाजियो यार. भाई राइट साइड में ओपन अप हो जाते हैं वो लोग. रादर बायर्न की राइट कॉन्टेस्ट टीम. अच्छा यार, दैट्स व्हाट आई गेस्ड. 2018, 17-18 basically. We didn't win the Premier League under Sarri and Mount never played under him. Yes, absolutely. I can smell Bayern cooking. लेकिन difficult है भाई ओपन अप करना. Like I said, आज सारी बॉल नहीं खेल सकते. आज प्रॉपर they have to play. Animesh knows it भाई. They have to play recent Manchester United type of football in terms of basically ओले के अंदर जो खेलते थे almost. I don't think they can play सारी बॉल आज Lazio. Otherwise they'll be beaten easily. क्योंकि आज remember Kimmich is playing right back, Guerrero is playing left back. आपका basically Pavlovic is in midfield with Goretzka. मतलब ऐसे प्योर डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर्स किम मिन जाए बेंच पर हैं. डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर्स कम है ऑन द पिच. तो जनरली वो लग रहा है मुझे फ्री फ्लोइंग फुटबॉल बोल दो, या बेसिकली शॉर्ट टेकर्स बोल दो, या क्रॉस टेकर्स बोल दो.
Tuchel has generally put more of them apart from the injury reasons, I'm assuming. Mbappe goal, guys! I totally missed it and वो खत्म भाई. Real Sociedad और Paris Saint-Germain is खत्म. Real Sociedad इसलिए 4-4-2 खेल रही थी और it didn't work. My bad guys. I missed the goal. लेकिन हम लोग वो वाला फॉलो नहीं कर रहे इतना. लेकिन अभी के लिए बेचारों को Real Sociedad as much as they deserve the respect in the group stage performance, लेकिन फॉर्म उतना नहीं है, हमको पता ही है, तो बोलना पड़ेगा उनके लिए सॉरी. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया भाई साहब. लेकिन इफ एनीवन कैन डिस्क्राइब द गोल, ग्रेट, क्योंकि आई डिडंट मिस दैट गोल. ऑफ कोर्स ये दूसरे टाइम में खुला हुआ है, लेकिन बाय द टाइम मैं देखा आपका कमेंट, मैं यहाँ फोकस और कमेंट्री दे रहा था फॉर द फर्स्ट मैच, तब तक चलेगा. डेम्बेले असिस्ट गाइस, डेम्बेले असिस्ट. टर्टल का गोल ऑलरेडी, यस. 3-0 ऑन PSG ऑन एग्रीगेट. Zaire Emery is a baller, man. Absolutely Barca universal. भाई 2-3 बंदे ना, मतलब अगेन Barca universal, sorry to say, लेकिन I have to say, I know injured है बंदे. You know it, Barca universal again an OG of the channel भाई. मतलब I like the fact that कोई किसी के पास वर्क रेट बिंदास होता है ना, वर्क रेट एंड टैलेंट, दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. अगेन व्हाई एम आई अ ह्यूज फ्रैंक लैम्पार्ड फैन. वर्क रेट एंड स्किल्स दोनों थे. लोगों को लगता है कि खाली वर्क रेट था, खाली गोल्स थे, नहीं, स्किल्स भी काफी सारे अच्छे थे. ही हैड सम ब्यूटीफुल सिल्की टचेस, ब्यूटीफुल स्टेप ओवर्स. लेकिन वही है, गावी, पेड्री, especially मैं तो बोलता हूँ आई एम अ ह्यूज गावी फैन, देन Zaire Emery fan. Zaire Emery could do both the things like a Gavi in my opinion. Again, very young Zaire Emery is. You know, such players I actually like, and that's why again Mason Mount gone to Manchester United and not done well. I know it's आप बोलोगे flop etc, but I used to like him. People know it. OG's channel again. That's why हम कचरा गैलेगर को भी पसंद करते हैं, because he has improved on his football. Kane pulling Anderson back, yellow card होना चाहिए technically, लेकिन Kane doesn't get a yellow card luckily. ये क्या है, Manchester City fan बोल रहा है, I really enjoyed the moment when he was walking away furiously and the commentator saying he's walking away from the job. चलो भाई, नेट फाड़ दिया एम्बापे ने, और बाप रे, आई शुड हैव सीन दैट, आई मिस दैट मैन. कोई नहीं. चलो भाई 3-0 हो गया वो वाला तो, लेकिन रियल सोसिएडाड बिग डिसअपॉइंट. हाँ यार, अगेन मतलब इन अ स्ट्रेंज वे मैं बोलता हूँ दैट बिकॉज ऑफ देम स्नेहिल थोड़ा सा राउंड ऑफ 16 और इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि इंटर मिलान एथलेटिको मैड्रिड देखने को मिल गया. नहीं तो इंटर मिलान टॉप होती है और उनको भी इजी ड्रॉ मिलता. तो कुछ होता है ना, कुछ रीजन होता है. जस्ट पुट इट दैट वे. Bayern need to score as quick as possible. Yes, absolutely, 100%. प्रबोधनी, जितना डीप जाएगा उतना ही प्रेशर will be on. And remember, Bayern have also injuries. Bayern have also tired players. ऐसा नहीं कि खाली लाजियो के हैं. Dembele ball, but Mbappe class है. Okay, fair enough. Words, yeah, Words is a different kind of player though. मैं बोलता हूँ Musiala and Words को मैं सिमिलर ब्रैकेट में डालूंगा. Zaire Emery को मैं डालूंगा more like between Gavi and Pedri, कहीं ना कहीं more skill than Gavi, but less work rate than Gavi. मतलब if you know what I mean, तो कहीं ना कहीं गावी पेड्री के बीच में डालूंगा. In terms of the profile, ability wise हो सकता है he might go above or below, I don't know, depends वो क्या लाता है in terms of consistency over the next couple of years. अब ऐसे शांत हो गए मैड्रिड मीडिया अबाउट एम्बापे लिंक्स. हाँ भाई, अब तो पता ही है. टेबास का आज स्टेटमेंट आया जीके कि भाई मुझे तो पता है और आई काइंड ऑफ हैव अ फीलिंग बोला, लेकिन पता ही उसको कि साइन कर लिया ऑलरेडी अनटोल्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट कोई नहीं. यहाँ पर फ्री किक विन वन बाय बायर्न म्यूनिख. Zaire Emery is not less. हाँ, I would love it. Zaire Emery को कोई भी टीम in the world can accommodate, and I know it's a huge statement, including Man City. Zaire Emery can fit in any team at this age. He's that good. In my perspective, he is that good. Work rate and skill का talent, desire be obviously these three the most important in any footballer, especially midfielder. Work rate, talent and desire. Zaire Emery is that. कहीं ना कहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ लैम्पार्ड वाला, that's why Lampard was preferred over Scholes and Gerrard in England, bro, because वो सब चीज लाता था and people would not like to say it. And I know मैं थोड़ा बहुत उस पर ही हूँ 2-3 दिनों से, लेकिन अपनी चेल्सी की मीडिया इनफ है नहीं भाई, तो हम लोग को कुछ चेल्सी कंटेंट क्रिएटर्स को बोलना पड़ता है, much as we love the other teams and players as well. I think Valverde also is a very good example. Yes, Valverde can fit in any team, absolutely. Valverde का लेकिन एक चीज है, Valverde का in terms of position, I still don't know honestly अनिमेश की उसका मतलब absolutely best position है क्या. मतलब in a 4-2-3-1 wide or a 4-3-3 wide or a 4-3-3 number 8, is that the best position? Probably in third one जो मैंने बोला, लेकिन all the three is very good. That's the best part.
तो इन अ स्ट्रेंज में माइकल एसियन का याद दिलाता है वालवर्डे प्राइम। अरे भाई एक सेकंड, बॉक्स में है बॉल, अरे गोल आना चाहिए था लेकिन नहीं, मुसियाला ब्लॉक, और अगेन अ ब्लॉक, गुरेरो का शॉट जाता है वाइड आफ्टर हिटिंग द लाजियो डिफेंडर। भाई साहब, मुसियाला एंड गुरेरो बैक टू बैक चांसेस इन द बॉक्स, नाइस ओवर द टॉप बॉल फ्रॉम बायर्न, राइट विंग से वापस कटबैक होता है मुसियाला को, or rather Muller को, who gives it to Musiala and whose shot hits the player, comes to the left wing, Guerrero hits the shot और वहां थ्रोइंग के लिए जाता है, which Bayern are not able to do anything about. डेम्बेले कंटिन्यूसली खेल रहा पीएसजी में विदाउट गेटिंग इंजर्ड, बारसा ट्रेनिंग एंड मेडिकल स्टाफ में झोल है। पता नहीं यार, मतलब एक होता है ना कहीं दैट एक मेन मैन फॉर द टीम भी है, आई नो बारसा में भी होना चाहिए था, बट अगेन मे बी डिडंट फील दैट, मे बी द वे ही वाज ट्रीटेड समटाइम्स, मे बी जेन्युइनली वो एक ग्रोइंग ईयर होता है मुजाहिद। द बेस्ट एग्जांपल इज आयरन रॉबिन, आई नो ही वाज ऑलवेज इंजरी प्रोन, लेकिन आई थिंक चेल्सी में जितना इंजरी प्रोन था वहां उतना कहीं भी नहीं था, रियल मैड्रिड एंड बायर्न म्यूनिख में इतना इंजरी प्रोन नहीं था, और आई थिंक दैट इज व्हाई चेल्सी सोल्ड हिम, व्हिच आई क्राइड दैट डे यार, आई लिटरली क्राइड दैट डे, मुझे याद है द डे आई कैन नॉट नेवर फॉरगेट, जोसे मोरिनो लीविंग फर्स्ट टाइम चेल्सी, और इनफैक्ट बोथ द टाइम्स, और आयरन रॉबिन जब छोड़ा था ना, मतलब अगेन ही डिड ग्रेट फॉर चेल्सी इन 2.5 सीजंस व्हाटएवर, बट यहाँ पर क्रॉस आया, 2.5 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट सीजन में फॉर अबाउट 4 months ही वाज इंजर्ड वेरी फर्स्ट 4 months आफ्टर साइनिंग, और आते ही बेसिकली उसको मिल गया प्लेयर ऑफ द मंथ, दैट्स हाउ गुड ही वाज आफ्टर 5 month ब्रेक, वाओ दैट वाज सम प्लेयर, मतलब यू डोंट सी इट, आज के दिन में 5 महीने कोई मिस करता है फुटबॉल एंड देन आता है पहले मंथ में प्लेयर ऑफ द मंथ इन द एंटायर प्रीमियर लीग, दैट वाज आयरन रॉबिन। पीपल डोंट रियलाइज हाउ गुड ही वाज, अगेन अनफॉर्चुनेट टू बी बोर्न इन द सेम एरा एज अदर्स, लेकिन यहाँ पर लाजियो काउंटर कर रही है गाइस, लेफ्ट विंग ऑफ लाजियो टेकिंग ऑन किमिक, एक टच आया है, इमोबिले गिरा है, बट पेनल्टी नहीं मिलेगा। दिस गेम एंड इंटर गेम आर इंटरेस्टिंग गेम्स, यस इंटर गेम ऑब्वियसली हैज टू बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आई थिंक एथलेटिको हैज एवरीथिंग टू प्ले फॉर वहां पर। Will Burley get demanding managers like Mourinho, Tuchel? नहीं, आज हार्दिक some in the nose वापस they have said कि the reason why the new management does not want to go for old managers is because they were under the old regime. तो कहीं ना कहीं ईगो बोल दो या कहीं ना कहीं स्टार्ट अफ्रेश बोल दो, दैट इज व्हाट द प्लान वाज विद फ्रेश आइडियाज, दे डोंट वांट द सेम काइंड ऑफ फुटबॉल, द सेम काइंड ऑफ रनिंग द क्लब एटसेट्रा, तो इसलिए वो शायद नहीं जाएंगे। मोरिनियो टुकल के साथ तो ऐसे भी लड़ाई होगी थी, दैट इज द न्यूज, अगेन इन द नोज थिंक दे नो एवरीथिंग, जैसे कि उनके बाथरूम में सुनकर ऐसे कान लगा के बोलते, आई रियली डोंट नो हाउ फ्रॉम वेयर दे गेट द न्यूज, कहीं ना कहीं रूमर आती है और बस फैला देते वो लोग आधा से ज्यादा, बट कोई नहीं, सही। Do you think this Bayern is better than Chelsea 2021? Chelsea 2021 से ये Bayern better है, मतलब again, मतलब if everyone is fit, yes, answer is yes, definitely यार, Chelsea 2021 wasn't like a मतलब world beater team यार, if I'm honest, it was very good, काफी impressive youngsters से यहाँ पर free kick लेते हुए Lazio in their box, गुड पोजीशन फॉर देम टू काइंड ऑफ आराम से खेलना वापस से, बट हाँ पुदन अगर सब लोग फिट है, अगेन आई मीन द कोमन्स ऑफ द वर्ल्ड, द गनाब्री, द किम मिन जायज ऑफ द वर्ल्ड, उपमेकानो अगर अवेलेबल है सब लोग, तो आई थिंक ऑन पेपर आई वुड डेफिनेटली पिक दिस बायर्न यार, नो टू वेज अबाउट इट। ऑफ कोर्स अभी फॉर्म में नहीं एक्सेट्रा, बट फॉर्म में नहीं देखकर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ एबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स 100%, वहां पर देखो, मतलब वी हैड व्हाट Kai Havertz, we had Werner, we had Tammy Abraham, we had Giroud, then we had Hudson-Odoi, we had Zuma, मतलब these players were not like world beaters, you know what I mean? Exactly. Chelsea needs strong keeper and striker like Vlahovic. We should have gone for it. अभी तो बहुत महंगा आएगा यार। I think box to box midfielder in 4-3-3 along with a tempo controlling CDM and a creative attacking mid Valverde. Exactly. Number 8 basically. ला लीगा बहुत ज्यादा फिजिकल लीग है, और बारसा में वो फुल गेम खेलता था, पीएसजी में उसको सब कर देते हैं। हाँ, that's a good point. क्योंकि I think Lee comes on for PSG. Barcola and Lee kind of are there as well. Remember, apart from Asensio injured है क्या भाई? Asensio का क्या है सीन अभी? Asensio is probably injured. Yeah, Asensio is injured. Kurzawa, Skriniar, Asensio, Kimpembe, Sergio Rico are out for PSG. चलो वहां पर अभी भी निलवन है गाइस। पेट्रोविच वर्सेस सैंचेज वर्सेस मेंडी वर्सेस केपा, मैं अच्छे से कंपेयर करूंगा, रुकिए जरा, रुकिए,
क्लियर किया बॉल बायन ने, साने कीपिंग द बॉल, फर्स्ट टाइम हेडर, लेकिन लूजेस द बॉल ऑन सेकंड टच, नो, बैडली डन साने। साने का यही प्रॉब्लम है, मतलब ही इज नॉट गॉट दैट, ही इज गॉट अ आयरन रॉबिन वाइब, लेकिन ही इज फार फ्रॉम इट। Petrovic, in my personal opinion, Petrovic in terms of pure shot stopping from far, चारों में probably I would go with from far अगर बोलूं तो yeah, I would probably go with Petrovic GK. From near, in terms of reflexes, just from near shot stopping, I would go with Mendy. People might be surprised. In terms of distribution, I would still go with Kepa. ठीक है. And in terms of basically doing the very basic things as a goalkeeper, Sanchez. He looks good, but he does not implement well. So that's your answer, GK. Overall, अभी भी मैं बोलता हूँ that overall right now on form Petrovic, but I still believe Petrovic has to improve. Definitely ज़्यादा presence and होल्डिंग ऑफ द बॉल ज्यादा बेटर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन बॉल्स कमिंग फ्रॉम द एयर, जहां पर मेंडी शायद थोड़ा सा बेटर था, ऑल्दो नॉट ग्रेट एज वेल, बट केपा वाज नॉट गुड, सो वाज पेट्रोविच। तो वहां पर इंप्रूव होना है अलोंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपिनियन, स्पेशली द किक्स। यूरोपियन फुटबॉल कितना फॉलो किया जाता है, डू दे हैव पैशन फॉर फुटबॉल? बिल्कुल बिल्कुल मुजाहिद है यार, इतना तो नहीं है खैर हम लोग जैसे कीड़ो जैसे, इतना तो नहीं है, बट डेफिनेटली है, काफी है, मतलब बिकॉज आई बीन टू एमएलएस मुजाहिद, एंड एमएलएस द स्टेडियम इज रॉकिंग, द स्टेडियम इज रॉकिंग। मैंने देखा था बकारी सानिया को, बकारी सानिया बेसिकली मॉन्ट्रियल से टोरंटो था, इफ आई रिमेंबर राइट, एंड आई हैड सीन बकारी सानिया, एंड आई हैड सीन Sebastian Giovinco, one of my better players of my era. Again, my era, I mean, I'm talking about late 2000s or early 2010s, जब खेलता था till about 2020. भाई उस टाइम के players weren't that technically dependent individuals, या जिता देते थे मैच, आजकल नहीं भाई। काका के याद दिला दिया यार, अगेन यूसीएल एंड काका भाई, he had some sensational performances, and Shevchenko, wow, what a player. यहाँ पर एंडरसन गिविंग अ फाउल इन अ नाइस पोजीशन फॉर बायर्न म्यूनिख। गाइस, आप कब से नेदरलैंड्स को सपोर्ट कर रहे हो? मतलब भाई सबसे पहले जब देखा ना फुटबॉल, ऑल्दो आई वाज एक्सपोज्ड टू इटालियन फुटबॉल फर्स्ट, कोबरा अगेन, वॉच आउट, एक सिंपल सा छोटा सा वीडियो है भाई, हमने बनाया ऑन ऑलमाइटी ब्लूज होम पेज में, आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट कॉल नो योर क्रिएटर, वो देखिए, थोड़ा डिटेल में नहीं बोलूंगा, वहां पर थोड़ा डिटेल में। बेसिकली इटालियन फुटबॉल से हम पहले वी वर एक्सपोज टू रॉबर्टो बाजियो मोमेंट 94, एंड उस समय जब भी टीवी में आता था, people like Ruud Gullit, and then later on Snyder, Seedorf, वो सब बिफोर वैन बैस्टन, उनके क्लिप्स आते रहते थे यार। तो एक चीज होता है वहां पर, एक यार फ्री किक वेस्टेड बाय बायर्न, इजीली क्लियर्ड बाय लाजियो, और एक फ्री किक भी जीता है, बट हाँ, तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग यार, जैसे रूड हुलिट यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, एटलीस्ट इन द क्लिप्स, लाइव ज्यादा देखा नहीं रूड हुलिट को ऑब्वियसली, बिकॉज आई स्टार्टेड फॉलोइंग फुटबॉल ओनली इन लेट 90s प्रॉपर्ली. So that was all it, and then later on obviously there were other players coming in like late 90s, maybe defending Ronald Koeman clips, for example, great free kick taker. Barca fans would relate to that absolutely. I remember a great over the top ball tha 94 World Cup mein from him, if I remember right. Then there was obviously say the Euros and the World Cup 98, 2000, 2002. In this duration they got all these youngsters coming through, तो तब थोड़ा बहुत और exposure with all those youngsters. Again, I'm talking about my favorite Dutch players of all time, that is obviously Ian Robben, Snyders of the world. तो I really like the way that they played यार, apart from जो already clips देख चुका था, तो कहीं ना कहीं वैसे बड़ा एसी मिलान को फॉलो करता था उस समय, बिकॉज इटालियन फुटबॉल ज्यादा आती थी टीवी पर अर्ली 2000s और लेट 90s में, अप अंटिल 2002. तो फिर ईपीएल ज्यादा फॉलो करते रहा, तो तब एसी मिलान में देयर वर अ फ्यू इटालियन प्लेयर्स, एंड स्टैम 99 में ही प्लेड फॉर एसी मिलान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज इन एसी मिलान बिफोर दैट, आई डोंट नो, लेकिन हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड आया था बाद में, आई रिमेंबर. एक सेकंड भाई, रेफरी लेट्स ऑल लाफ एट द रेफरी भाई, क्या हो गया रेफरी? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा. मुलर बॉल खेला कटबैक, रेफरी खुद को टिप कर दिया और गिरने से पहले हंसने लगा. रेफरी 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 रेफरी, इट वाज अ गुड बॉल फ्रॉम मुलर, और एक और बॉल हो जाए रेफरी के लिए. नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का,
मैं नहीं बताऊंगा। पुदिन को तो आ रहा है गुस्सा क्योंकि he wants Tuchel to win obviously. Edgar Davids, yes. Edgar Davids and Gattuso, no, I think they were both overrated. People might be shocked to hear that. Great tenacity, don't get me wrong, great tenacity. But just as footballers alone, I think Clarence Seedorf doesn't get. Edgar Davids was good for the media, for a video. He was very good, don't get me wrong. Okay, Beckham was good both ways. Edgar Davids also good both ways. Like, Beckham was actually a great footballer. Edgar Davids wasn't a great footballer, he was a very good footballer. Or tenacity was great, absolutely. लेकिन he wasn't a Roy Keane, you know what I mean? अरे फार पोस्ट में 3 बंदे थे यार, only Gendouzi, Delict missed it totally. Come on, the last man on the far post corner का, अरे भाई साहब मिस कर दिया totally. बिल्कुल यार, बिल्कुल. मतलब 2010 का पेन तो I can never forget, bro. Never forget, man. I literally remember 2010, even 2008 का Euros, man. Portugal started playing karate, bro. Respect to Portugal, but not for that much, यार. एक चेल्सी प्लेयर भी था मनीष करके, ही वाज प्लेइंग कराटे ब्रो मिडफील्ड में. अरे हेडर वापस से, बट एरिक डायर पुट्स इट हाई एंड वाइड. नाइस कटबैक आफ्टर द गेम प्ले राइट साइड में. कोमन वाज गुड एट बॉल प्लेइंग एज वेल. बिल्कुल रूड हुलेट और कोमन probably I'll put in the same family. Ruud Gullit, by the way, in my opinion, I would rate one step ahead. Ruud Gullit, again, Ballon d'Or winner. For me, Ruud Gullit was someone who could play as a sweeper, as a cam, as a second striker, as a proper midfielder. Wow. Again, Koeman was also a midfielder and defender kahin na kahin. Bilkul, I am lucky, man, Snail. I sometimes I'm lucky that first of all, I was born in an era jahan par mobile phones used to be so rare in the 90s. And of course, social media थी नहीं. आपको तो खैर 2010 तक भी बहुत कम थी. और कुछ उस समय किया. लेकिन bottom line being that in terms of like watching some legends, of course, my luckiest thing is watching Sachin's every innings, bro. Sachin's every innings, literally. That is almost every innings. I am like very lucky to be able to. Sorry, I just feel that way. Of course, Almighty Sports पर है. You guys know the love for Sachin I have, but Tuchel आज sack होगा या कल if Bayern loses Messi good बोल रहे. I think अगर हारेगा तो पक्का जा रहा है यार. वो खुद ही शायद घर नहीं जाएगा Bayern में. He'll go to his real home. I don't know how many of you all know Tuchel, no respect, man. Lockdown के दौरान people don't know about this. Very few people know. You know what? ताकि फोकस रहे और ज्यादा कंसंट्रेशन रहे ना. अरे लाजियो को गोल ऑलमोस्ट. अरे भाई साहब काउंटर में इमोबिले ऑन द फार पोस्ट में हेडर क्रॉस है द लेफ्ट हैंड साइड से. नो वे. दैट वाज बिग. वाज इट एंडरसन क्रॉसिंग? भाई एरिक डायर, वेरी इंपॉर्टेंट टच, मैन. एरिक डायर को गाली देते हम लोग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टच एरिक डायर, गाइस. वाओ, दिस वाज अ मोमेंट जहां पर बच गए बाइन. बाल बचे भाई, लिटरली बाल बचे. दैट वाज अ प्रॉपर चांस. एंड इफ योर चेल्सी रिमाइंड्स मी ऑफ 2009 बारसा के साथ, वेयर वी मिस चांसेस एंड देन रेफरी ने हक दिया था. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हु वाज इट गाइस? Zakagni, acha, it was the left winger. Got it. Wow, brilliant stuff, man. Lazio. Bhai, don't underestimate the power of a common man. जैसे बोलते हैं. Underrated is Roy Keane. People don't rate him much. I think this generation doesn't know. When I was growing up, Roy Keane was like the best midfielder in town. Simple. भाई एक बार भी ढंग से पानी नहीं पी सका. एक जन ईयरफोन हटाते ढंग से पानी पीते. ठीक है, एक सेकंड. अब्बा यहां पर गोल आने वाला है बाइन का. बॉक्स में चल रहा है लेकिन लिटरली 1 2 3 4 5 6 7 पीपल इन द बॉक्स लाजियो के और 5 लोग बायन के इन द बॉक्स. वाओ, ये क्या हो रहा है भाई? एंडरसन इज द लॉन्ग बॉल ट्राइंग फॉर अ क्लियरेंस काउंटर पे, लेकिन नहीं. डेलिक्ट इज देयर. पहला वर्ल्ड कप 2010 देखा था. लव दैट स्पेन टीम भाई. अगेन स्पेन एब्सोल्युटली बेसिकली वर सेंसेशनल एट टाइम्स, unplayable at times. Mujahid, absolutely. Lekin I think Dutch team did fantastic as well in my opinion. Honest opinion. 2014 में फिर भी Dutch team reached the, I know, painful. अरे भाई गोल almost. हो गया भाई गोल. It is Harry Kane. Deflection, but to hell with it. Tuchel is right now having a chance.
38th minute, Bayern Munich get the first goal. Harry Kane, the man it is after all. और टूकल का जॉब अभी के लिए सेफ एटलीस्ट फॉर दिस सीजन. तो भाई साहब, game is on, guys. Game is on. Providel did get a touch as well. Goalkeeper Rafael Guerrero ने कट इन किया था. केन ने पास बैक किया. हाई बॉल फ्रॉम मुसियाला, आई बिलीव फार पोस्ट में आया एंड अ नाइस वन. भाई साहब, was it Guerrero assist, man? Technically I think yes, Guerrero was on the right side of Harry Kane despite being a left back. तो Rafael Guerrero को बोलना पड़ेगा. Of course Muller, यार, Muller का terrific header to keep the ball in play. In fact, getting in Rafael Guerrero for the assist और एक deflected goal, but definitely लेगा Harry Kane and Tuchel अभी के लिए तो for sure. I'm not going to go with ages put in here, but I hear you absolutely. Another player who took the world by storm was the Roberto Baggio. Like I said, he was obviously Maradona during that time. Maradona and Ruud Gullit were definitely there. But for me, Bergkamp, of course, Messi's GOAT. But Roberto Baggio really caught the eye for me as a football fan bano karke, because he was so infamous because of the missed penalty in 94 World Cup. तब ये होता. Again, I was like literally a kid that time, but that's how I kind of got exposed. ज़्यादा hype हुआ था वो चीज moment ना. Of course, apart from the Maradona moment of getting banned and Ruud Gullit walking away from the team before one day before the World Cup. और यहाँ पर बढ़िया साने एक और almost goal आ गया भाई. Brilliant first touch football by Bayern Munich on the right hand side. Musiala on the left foot, just about putting it wide. Totally opened up Lazio on the left-hand side, but the goal nahi aaya. It is still 1-0 to Bayern Munich and 1-1 on aggregate. Guys, come on, Tuchel. Come on, Tuchel. Another player, yeah. तो देख लिया था मैंने तो सचिन को बस, doesn't matter when you've seen it, you've seen, you're lucky enough. Ruud Gullit's time is Chelsea. Again, like I said, Cobra, I've not seen much of Ruud Gullit's live matches because I'm not that old either, mere bhai. But like I said, when he was at Chelsea, when I started watching, that time he was taking over as a player manager and then a manager. तो वो एक last time था Ruud Gullit था, so that's not the prime. Zola को definitely देखा मैंने तो. Zola was one of the best footballers aesthetically in the Premier League, जो Sir Alex ने बोला है by the way. बिल्कुल dear Eric Dyer was a class defender bro even when he's Spurs. लेकिन movement is like Maguire-ish ना थोड़ा बहुत, if you know what I mean. That's the only problem. Tuchel being saved by Spurs player Kalyug. That is the best moment in sporting history for me. Mujahid bhai OP. ये वाला और टाइटन कप, if you know टाइटन कप, मैं लिटरली स्टेडियम में था इसलिए मैं बोल रहा हूँ. मतलब couple of moments apart from obviously winning the World Cup, लेकिन स्पोर्टिंग हिस्ट्री में मतलब गूज बम्प्स मोमेंट जो बोलते हैं ना, lucky enough to be there, man. Lucky enough to be there. Lucky enough to be live praying to gods. We were all doing that, man. Lucky enough, man. Again, goalkeeper should have done better. Yeah, probably he should have done better for sure. Kane deserves one trophy. मिला यार उसको समर में, समर. But I know मजाक ही कर रहा हूँ मैं. You know exactly what I mean. Banter aside, he's a brilliant player. People don't rate Henrik Larsson. अरे भाई क्या याद दिला दिया यार, क्या याद दिला दिया. Henrik Larsson, man. Wow, his burst of just arriving in the box in the last moment and boom. Wow. Henrik Larsson, Pippo Inzaghi, and Henrik Larsson was a better footballer plus better pace. Wow, brilliant. Yeah. He could play wideish as well at times. Henrik Larsson, man. Henrik Larsson, I remember he had a short stint a couple of times at big clubs. Brilliant. 2006, who can forget when Barcelona beat Arsenal. Alessandro Del Piero, wow. मतलब I know, again, it's easier to say that now भाई बहुत अच्छे footballers है, but I don't know यार, मतलब इटली के पास ना, I remember Alessandro Del Piero, then they had Christian Vieri, then they had Antonio Cassano, ठीक है, यहाँ पर handball दिया गया है, I believe against Bayern Munich, against Sane, and crowd doesn't like it, but ठीक है, big deal. So they had what? Cassano, Vieri, Inzaghi, Iquinta. They had, of course, Luca Toni, Papre. Some forward, man. Del Piero. Totti was not a center forward, but he could play as a false forward, a second striker. Wow. Italy ka, bhai, even wingers mein. I remember Mauro German Camoranesi being there. Zambrotta, fullbacks mein aata tha. Bhai, Italy ki team na. Counter mein kya marti thi, bhai. Kya marti thi. Again, 2006 वर्ल्ड कप ऐसे नहीं जीते थे. आई नो
काफी डॉगड फुटबॉल होती थी, लेकिन आई यूज्ड टू लाइक दैट काउंटर पे. अगेन actually Conte ki Italy, if you remember, was superb, although they didn't win huge, but it is what it is. Again, let's get back to match side by side, guys. Again, जो भी लोग देख रहे हैं, 1 घंटा हो गया, लाइक बटन दबा दीजिए. आप लोग बोलिए if again you want me to change the thumbnail, I can do that. I was still confused. Probably we'll have to do that maybe in half time, I don't know. David Dia, yeah, that's true. लेकिन उसका reason ये है ना अनिमेश, honestly he had a worse defense than previous years and that is why he's not rated and people don't notice. लेकिन technically he did better than the others. अच्छा, और again he has won Premier League but he's not won like when he was the main guy. So Animesh, maybe that is why. Maxwell Athene is right up there probably. Yeah, that's a fair point. Again, as an Indian fan मैं बोल रहा था कहीं ना कहीं Snail, you know it. For me certain moments as me, like, you know, beat Milan 2007, you can't forget Snail, you know it जो मैं बोल रहा हूँ. 2007 Milan, brilliant cross यहाँ पर Lazio का, लेकिन well done again. Delict and Eric Dyer are actually not too bad as a partnership in my opinion. But then 2012 Chelsea, of course. Then 2005 Chelsea in the Premier League. Then Sachin Tendulkar, like I said, the Desert Storm, Titan Cup innings, 2011 World Cup, 2007 T20 World Cup, man. These are some sporting moments. Of course, Gaba, who can forget? Never forget certain moments. Adelaide, Kolkata Test. These are all like entire my best sporting moments in history for me. Again, I might have missed a couple of them, I'm pretty sure. ऑडी कप ट्रॉफी नहीं यार, काउंट नहीं होता, मजाक ही कर रहा था, बेचारे का कान खींच रहे थे हम, लेकिन ठीक है, गोल कर दिया. डेनिस बर्गकैम्प has Hasselbank. Again, lucky enough to watch that, man. That's all I can say. I don't want to make you jealous. Di Natale और Iquinta, no, कहीं ना कहीं उनको ज्यादा गेम टाइम नहीं मिलता था, because like I said, there were like literally 5 or 6 strikers ahead of them. Again, they were quite new. Di Natale in Udinese was something else. By the way, कितने लोग ने देखा है Alexis Sanchez को Udinese में भाई? He was brilliant there. Alexis Sanchez को Udinese में, Cuadrado को Udinese में, brilliant. Again, Serie A watcher bro always. The wide और एक क्रॉस अच्छा था यार, किमिक का I believe क्या? लेकिन Bayern keep the ball. Musiala taking his man on left wing में, Guerrero ने क्रॉस करने की कोशिश, लेकिन well blocked by Lazio. It's a corner, guys. बिल्कुल कानावारो भाई ऐसे ही नहीं मिल गया उसको बैलन डोर. ऑल्दो सच में बोलो तो आई डोंट थिंक इट डिजर्व द बैलन डोर. अगेन जिदान का हेडबट था, इट वाज जिदान हैंड्स डाउन डिजर्व्ड इट, हैंड्स डाउन. जिदान केम आउट ऑफ रिटायरमेंट एंड डिड व्हाट ही डिड एट द वर्ल्ड कप, मैन. अपार्ट फ्रॉम द हेडबट, वो हेडबट एक मोमेंट जिदान का करियर खत्म कर दिया, एज वेल एज बेसिकली उसको यू नो रेड फ्लैग दे दिया. जिदान वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल. पुदन आपको वार्निंग है मेरे भाई, बिग अप टू यू, लेकिन भाई आप बहुत स्पॉयलर्स देते हो यार. People are here to watch our reaction. I hope you can respect that, मेरे भाई. Big up to you. लेकिन यहाँ पर कॉर्नर है and brilliant volley goal, absolutely brilliant volley goal. Matthias de Ligt, the Dutchman is here, guys. Saying Tuchel, the Dutchman, man. Come on, man. Get in, man. Tuchel is in. और दिखा दिया भाई Bayern Munich ने, unfortunate Lazio, but it is Bayern Munich with 2 just before half time. Or on the lead, Bayern Munich 2-1, bro. Matthias de Ligt of the corner. Awesome volley. Fantastic finish. Thomas Muller touch लिया रे. Don't tell me Thomas Muller touch लिया. Don't tell me he was offside. But why did he take that touch, Thomas Muller? But anyway, गोल आ गया तो टेंशन नहीं है बायर्न के लिए, लेकिन Matthias de Ligt deserved that goal, bro. Thomas Muller goal, guys. No problem, Pudin. नहीं 3-4 स्ट्रीम में Pudin, I noticed that. Please, I always request it. समझा कर यार थोड़ा सा. I'm openly saying it because I've requested earlier as well. I had to take the name, sorry मेरे भाई. Big up to you as well. लेकिन no spoilers, guys. At the end of the day, the whole point of a watch along is the audience, I believe, wanted to see our reactions. Again, big up to you all, absolutely. लेकिन ऑफसाइड नहीं है. It is 2-1, guys, and it is half time. दूसरे गेम में क्या हो रहा है? आई थिंक खत्म होने वाला है, बस एक और गोल हो जाए खत्म हो जाएगा. Bayern will come back. Yes, most of us knew it. लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है एक गोल है लाजियो के पास.
और अगर वो फर्स्ट गोल मारते आफ्टर द सेकेंड हाफ, ऑल वी नो इट माइट बी 2-2। याद रखिए मेरा प्रिडिक्शन था 2-1 ऑन द नाइट, बायर्न विल विन। आई डोंट वांट दैट, बट आई थिंक 2-1 विन और एक्स्ट्रा टाइम तक जाएगा। अभिषेक इन द हाउस, सलीम अंटारी भाई, सलीम अंटारी क्या दिन याद दिला दे, बिल्कुल बिल्कुल। अगेन अभिषेक को अच्छा लगा, चलो नाइस। दैट इज व्हाट आई नीड, द फीडबैक मैन, आई नीड अ प्रॉपर फीडबैक। अभिषेक दो थंबनेल से मैं कम से कम 5-10 मिनट तक लोगों से पूछ रहा था, प्लीज गिव मी फीडबैक, प्लीज गिव मी फीडबैक, कौन सा बेटर है। फाइनली आपने करेक्ट बोल दिया, चलो थैंक यू। लेकिन होपफुली पीपल कम इन भाई। आई थॉट सम पीपल से आई नीड टू इंप्रूव माय थंबनेल, तो लोग आएंगे नहीं। कहां है भाई लोग? वेयर इज द ऑलमाइटी फैम ब्रो? क्या हम लोग घंटा जानते हैं क्या? खाली अबाउट 99 से देख रहे हैं यूसीएल, और कीड़ा है भाई लिटरली यूसीएल का। चेल्सी नहीं है, एसी मिलान नहीं है, फिर भी कीड़ा है, फिर भी पैशन है मेरे भाई सब लोग। डोंट यू थिंक वी ऑल डिजर्व बेटर? Don't you think? Ittu sa, with all due respect to all the others there. Lekin, why do you think this happens? But koi nahi. People have an assumptions. Assumptions are all mother of all fuck ups. But we don't do that because we have some fun. Imagine this exit announcement motivates Tuchel and they end up having a great UCL, maybe even winning it. I would love that, and I think we deserve it absolutely. This PSG has become dead rubber. We knew it. Isliye we picked this game, yeah. Much more than even Tuchel was Sarri, I think is. अगर वो PSG वाला गेम बहुत क्लोज होता, वी माइट डू अ डबल वॉचर प्रॉपर। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत स्कोर रखा है उसका ओपन साइड बाय साइड, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ आई न्यू इट। क्योंकि सोसिएडाड बहुत गंदे फॉर्म में है, लाजियो भी गंदे फॉर्म में, लेकिन वो लीड में थी, सोसिएडाड ट्रेलिंग थी विद 2 गोल्स दैट टू। रियल सोसिएडाड इतना अच्छा खेला, बिल्कुल इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग ना, because of the fact that they I think lost a couple of players. We did cover in the preview earlier in the evening in case you missed it, but उस गेम में क्या होता है, देख ही रहे थे भाई क्या हो रहा है। Again, guys, जो भी लोग देख रहे हैं, do not forget to hit that like button. Remember, it's always a fan channel for all to see. Karan in the house, big up, all the best for your boards, मेरे भाई. Marcelo Lippi was proper maintaining defense shape. Yeah, bhai, Italian managers, man, and Chelsea have a relationship. You know that absolutely. But let's talk about this. Kylian Mbappe scoring a very, very important goal for PSG, and I believe it is a great goal as well. और PSG ऐसे नहीं बोलूंगा डोमिनेटिंग पर से अगेंस्ट सोसिएडाड, लेकिन 6 शॉट्स विद 4 ऑन टारगेट with 0.83 expected goals over 0.05 और रियल सोसिएडाड इज क्लियर कि PSG आर द बेटर टीम, ऑल्दो हमने वो गेम डिटेल में नहीं देखा है। हैविंग सेड दैट, हकीमी इज ऑन येलो, मेंडेस इज ऑन येलो और डेम्बेले इज आल्सो ऑन येलो, तो हो सकता है दे माइट मेक चेंजेस, दे शुड मेक चेंजेस बिकॉज वो येलो कार्ड पर है। यू डोंट वांट टू गेट अ रेड कार्ड और गेट सस्पेंडेड फॉर द नेक्स्ट लेग, फॉर द क्वार्टर फाइनल्स दैट इज, क्योंकि अभी 3-0 दे आर हाई ऑन एग्रीगेट compared to Sociedad. Again, Colomwani आ सकता है, Soler आ सकता है, Kangin, Ugarte, I think Danilo Pereira, these are proper 5-6 guys. Marquinhos, Mukiele, भाई साहब क्या बेंच है भाई PSG की, क्या खतरनाक बेंच है। बायर्न म्यूनिख लाजियो क्या हो रहा है भाई? बायर्न म्यूनिख लाजियो, ऑब्वियसली बायर्न म्यूनिख का डोमिनेटिंग पोजीशन, लाजियो का काउंटर में एक बढ़िया चांस था, लेफ्ट हैंड साइड से क्रॉस आया था, फार पोस्ट में इमोबिले वाज ऑलमोस्ट देयर बट जस्ट अबाउट मिस दैट हेडर, नहीं तो वो गोल होता तो भाई बायर्न का खत्म हो जाता। हैविंग सेड दैट, बायर्न स्कोर्ड, ऑफ कोर्स वेरी गुड प्ले बाय थॉमस मुलर, द गाय, द एक्सपीरियंस गाय, भाई बंदा है, जब कॉल्ड अपॉन ही इज देयर। थॉमस मुलर केप्ट द बॉल इन, वेरी डिफिकल्ट हेडर बैक, और गुरेरो भी भाई, गुरेरो फ्रॉम लेफ्ट बैक डिड वेरी वेल इन माय ओपिनियन, ही इज हैविंग अ गुड गेम, एज मच एज डेविस शुरू नहीं किया है, गुरेरो अच्छा गेम खेला है। एंड देन इन द बॉक्स ऑन द राइट साइड ऑफ गेम, बीइंग लेफ्ट साइड, he covered so much distance और उसने एक बॉल डाला, केन का शॉट डिफ्लेक्टेड, गोल हुआ। Providence should have done better by the way, लेकिन केन कहीं ना कहीं also deserves. Having said that, the second goal भाई मुलर, हाँ फर्स्ट गोल के लिए मेहनत किया तो भाई deserve that goal, but come on, Delic totally deserve that goal. Of that corner volley shot, fantastic shot Delic का just before half time whistle, और मुलर ने टच कर लिया when Lazio was keeping him on for whatever reason. Lazio need to make a change attacking wise. हाँ ज्यादा अटैक नहीं कर सकते। I'm surprised that Isaacson is basically on the bench. Isaacson is someone who could be a good attacking prowess. आप लोग बोलिए, what would you do if you're Lazio? Pedro, it's too early for him to come on at this age. I don't know. Again, जो भी लोग देख रहे हैं, do not forget to hit that like and subscribe if you're new. Always a fan channel for all to see. आप लोग let me know your comments and views. I'm taking the comments now one by one. Again, if Inter first आता, then it would have been PSG Inter. That's what we are missing. But our Inter Athletic also good. Okay, fair enough. Fair points, Nehil. No problem. Favorite club और country जान सकता हो? बिल्कुल यार, country तो इंडिया है obviously. लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप्स और यूरोज एक्सेट्रा नहीं क्वालिफाई करती, वर्ल्ड कप यूरोज के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है,
तो over the years, because I like the Dutch way of playing football late 90s में, and my favorite footballers early 2000s में were couple of them from Dutch, तो मैं डच टीम को फॉलो करता हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, इंग्लैंड जनरली देखा हूँ काफी, लेकिन आई डोंट सपोर्ट देम पर से. लेकिन सम प्लेयर्स इन इंग्लैंड आई यूज्ड टू लाइक व्हेन दे यूज्ड टू प्ले, मतलब ऑफ कोर्स द लैम्पार्ड्स, द जो कोल्स, द एशली कोल्स, द यू नो मतलब जॉन टेरीज, एंड ऑफ कोर्स मतलब टू सम एक्सटेंट इवन आई लाइक्ड अपने Paul Scholes and Gerrard and whatnot for England and Beckham. लेकिन I'm more of a Dutch and Indian fan. क्लब में obviously it's Chelsea, आप देख सकते हो, Almighty Blues, the other channel linked below. लेकिन AC Milan have a soft corner because of the exposure I got early on to Italian football. अरे आकाश इन द हाउस ब्रो, क्या हाल है भाई? नहीं यार, गड़बड़ है फॉर श्योर. अगेन ज्यादा जज नहीं करेंगे क्योंकि इट्स अर्ली डेज. आई नो 2-3 एक्स्ट्रा मैचेस ही आप बोलोगे फॉर द गुड टीम्स, बट दोस 2-3 एक्स्ट्रा मैचेस इन दैट बिजी पीरियड ऑफ द ईयर माइट मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन माय ओपिनियन. लाइक जोकर, आई थिंक अगेन बहुत दिन हो गया बात किए हुए, करते हैं बात, लेकिन द रियलिटी इज दैट मतलब कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर है, क्योंकि आप किससे ड्रॉ करते हो उस पर निर्भर करता है, आप कहाँ अवे जाते हो वो भी बहुत निर्भर करता है. तो आई थिंक देयर इज अ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन इट. So it's very soon to judge, but like I said, too many matches never help the players, but as a viewer I don't mind it, so it's both ways. But कोई नहीं. रोनाल्डो नानी वाला मोमेंट, अरे भाई अगेन अभी तक कौन सा बेस्ट प्लेयर रहा है? बायर्न लाजियो में बोलिए, who has stood out? In my personal opinion, Rafael Guerrero has literally been there throughout the match left wing में. राइट साइड से अटैक ज्यादा आया, बट राफेल गुरेरो has made the difference in my opinion. नहीं मतलब अगेन मुल्लर फॉर दैट गोल एंड दैट गोल फाइनली, मतलब दोनों गोल्स में मुल्लर का था. और राइट साइड में 1-2 जो हो रहे थैंक्स टू किमिक, बॉम्बिंग ऑन, साने बीइंग देयर, पैब्लोविच बाय द वे डिफेंसिवली काफी अच्छा रहा है, नॉट अलाउइंग लाजियो टू काउंटर, आई मस्ट से दैट. तो राइट साइड हैव बीन मोर इफेक्टिव एज अ यूनिट. लेकिन सिंगल प्लेयर अगर मैं बोलूं तो आई थिंक आई वुड लाइक टू से राफेल गुरेरो हैज एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड मी. आप लोग बोलिए, हु वुड यू से इज द स्टैंड आउट प्लेयर अभी तक? Yep, absolutely, Abhishek. Lekin I think sometimes no, players can't do it in every club, and that's what the tenacity we were talking about earlier in the stream. I think you missed it, but we were discussing the topic. But again, इस game में anyone who's watching this match, anyone in the chat, कोई भी है जो देख रहा है match? I would say Pavlovic. Yeah, Pavlovic was very good. Guerrero was so good in the first half. Guerrero and Pavlovic generally. I think Pavlovic का क्योंकि expectations low है, that is why. But I think Kimmich ने बहुत अच्छे balls डाले थे. I think he really put some good balls. In this game, anyone who's watched by chance Real Sociedad or PSG में who stood out, again as a footballer, we all are fans of Zaire Emery already. We know there's hardly anyone जो नहीं है. Beraldo looks like a good signing for them. Then Mbappe obviously scoring the goal, Dembele getting the assist. But you guys let me know what is the thing वहां पर, who's stand out. Junaid agrees. Sane misfiring. Sane, to be honest, more is expected out of him. Again, Mane लड़ाई हुई उसकी कहीं ना कहीं. If both of them were there, only one would have played possibly. Snail is like new format seems fine to me. It has taken one of the selling points of ASL as a strength of having big matches in league phase. Yeah, you have a point. क्योंकि 4 मैचेस आप खेल रहे हो कंपेयर टू बेसिकली 4 डिफरेंट टीम से खेल रहे हो कंपेयर टू बेसिकली पॉसिबली जस्ट 2 मैचेस. तो बिकॉज आपके एक ग्रुप में 4 टीम्स हुआ करते थे और एक ग्रुप में 4 टीम्स हुआ करते थे, तो उसमें जनरली वन ओपोनेंट यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रांग और एक और ओपोनेंट वाज लाइक लिटिल बिट थोड़ा बहुत स्ट्रांग समटाइम्स, अनलेस इट्स अ ग्रुप ऑफ डेथ. तो ज्यादा क्लोज मैचेस कम देखने को मिलते थे. एब्सोल्युटली. Mikel Merino bossing midfield. Chalo, thanks for the update. But then watching the Bayern match from Leeds. Are big up. He looks lost. Abhishek bol rahe. Hakimi will be suspended for the Champions League quarterfinal first leg if PSG qualify. Okay. Thanks man. Again, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार they should be substituting people, but Hakimi is already not in for the quarterfinal, so that is why he might just continue. As much as वो red card के लिए तो थोड़ा risk है रहता ही है. बट डेम्बेले और मेंडेस को येलो कार्ड क्यों मिला भाई? मतलब क्या हुआ ऐसा कि यार येलो कार्ड मिल गया? क्या और सेलिब्रेशन कीजिएगा डेम्बेले ने कि भाई मुझे असिस्ट मिल गया? आई डोंट नो. कैन लाजियो कम बैक? ऑफ कोर्स. मेरा प्रेडिक्शन है भाई मुजाहिद. मेरा प्रेडिक्शन है कि भाई आई नो आई माइट बी रॉन्ग, आई नो आई वांट टुकल टू विन ओवर सारी,
बट लाजियो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे. आई एम टेलिंग यू, इमोबिले वाला चांस वाज द एक्चुअल चांस, अ प्रॉपर चांस इमोबिले पे. आर्ग्युबली शुड हैव हेडेड दैट बॉल इनटू द गोल. दैट्स हाउ गुड अ चांस दैट वाज. काउंटर में ये, बट आएंगे चांसेस, आएंगे मुजाहिद, दे विल एंड दे हैव टू टेक इट. दैट्स द थिंग. और इमोबिले इज एक्सपीरियंस इनफ टू टेक इट. और अगेन रिमेंबर, a certain Pedro, Mujahid bhai knows it, a certain Pedro from the bench later on, who knows. लेकिन they cannot concede anymore. They can come back, they cannot concede anymore. मेरा prediction था Bayern 2, Lazio 1 on the night, and that means 2-2 aggregate and goes to extra time and Bayern scores the winner. ये मेरा prediction था, although I wanted them to easily win in normal time. आप अगर चेल्सी के लिए कोई प्लेयर साइन कर पाते तो कौन सा करते भाई? बहुत सारे यार. हाँ करण, इसका जवाब ना आपको मिलेगा हमारे फीफा स्ट्रीम्स में, क्योंकि जो चीज रियलिटी हम कर नहीं पाते ना, हम फीफा स्ट्रीम्स में कर देते हैं. एंड यहाँ पर हम करते हैं कभी कभार, चिल स्ट्रीम्स होते हैं भाई. करण, इफ यू डोंट नो, चेक इट आउट, वी हैव आवर फीफा स्ट्रीम्स. यहाँ पर हम क्रिकेट, फुटबॉल, जनरली स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं. क्रिकेट मोर, लेकिन इवन फुटबॉल एंड गेमिंग स्ट्रीम्स एंड चिल स्ट्रीम्स, तो आप चेक कर सकते हो. वहां पर बहुत सारे प्लेयर है. आई थिंक लुइस डियाज ऑफ लिवरपूल मैं बोल चुका हूँ पहले इन द पास्ट. ग्रेवेनबर्ग when he was basically that promising guy, I always wanted him at Chelsea. मतलब to some extent, जब मेसन माउंट छोड़ा था, I thought that could we get something like a workhorse like Gavi, but obviously he wouldn't come from Barca. जब रूडिगर छोड़ा, I thought could we get someone like an Araujo, but nahi, obviously he wasn't coming. Then people from other teams, obviously I didn't want Kevin De Bruyne to be sold in the first place, so you know what I feel वहां पर. A lot of players यार, क्योंकि अभी तो ऐसा नहीं कि चेल्सी इज आइडियल. A lot of players, in fact, मैं बोलता हूँ right up there. There is a lot of unnecessary negative buzz around this UCL format. I believe people should first wait. बिल्कुल, very well said. I like that comment. Again, negative मैं भी हूँ. At certain aspects मैं भी negative हूँ. Certain aspects positive भी हूँ. Bottom line being that you have not seen teams actually in that zone. वो भी एक सीजन भी नहीं, मैं बोलूँगा कम से कम 2-3 सीजन देखिए. रुकिए जरा ला, मैं बोलता हूँ. हल्क, अरे भाई कितना लिंक हुआ था भाई वो चेल्सी के साथ. अरे कितना ज्यादा लिंक हुआ था. मैं तो अभी भी विलियन चाहता हूँ भाई. करण, विलियन, ब्रिंग मी विलियन ब्रो. ब्रिंग मी अ वर्कहॉर्स लाइक विलियन विद अ सेंसेशनल ब्राजीलियन क्वालिटी इन द एंड. आई नो रेयर, बट इट हैपेंस. गरीबों का मसीहा विलियन, वो मैं बोलूंगा भाई. मुझे लगता है, मतलब पता नहीं, आई ऑलवेज लाइक दोस वर्कहॉर्सेस टाइप्स हु हैड दैट एक्स फैक्टर. इसलिए पीपल लाइक Gavi, Mason Mount, to some extent Willian, and I know different players there, but you know what I mean. Literal workhorse, run, and then something out of nothing. Voila. I like that players. I don't know. That's just me. I was dying for it to happen. Hulk wala. Yeah, बिल्कुल भाई. Hulk तो बहुत ज़्यादा. I think I don't know why he didn't come finally. मतलब he was almost like pretty sure that he was going to come to Chelsea, but I don't know. बट ठीक है, मतलब ऐसा नहीं उखाड़ा यार उसने कुछ भी. और दूसरा एस्पेक्ट ही सुना भाई, अनिमेश, who actually has that class when needed. That is what it's saying. Like the person may not dribble all the time, the person may not be fantastic to the eye all the time. इसलिए Lampard huge fan bro. Back in the day, I was. Even Gerrard, to be honest, Gerrard and Lampard for me, मतलब as a Scholes was absolutely brilliant. Animesh, यहाँ पे United fan, absolutely brilliant. Of course, a legend and a goat in that particular role. A lot of other players like Pirlo, later on Cesc Fabregas, Cruz, वो लोग रहे हैं for me. But just me as a fan, मतलब for me, I would, मैं pick करूँ ना coach जैसे, I would rather have a Lampard and a Gerrard, if you know what I mean. Not the England वाला Gerrard especially, लेकिन कोई नहीं. ESL का तो details भी clear नहीं 2 बार हुए थे, लेकिन स्पेकुलेशन था. यू हैव अ पॉइंट, बट और सेकंड टाइम ऑलमोस्ट क्लियर था. आई थिंक सेकंड टाइम बेटर सोल्यूशन भी दिया था ईएसएल ने, बट उसमें कंफ्यूजन ये था कि हाउ डू यू स्टार्टिंग में गड़बड़ है. हाउ डू यू सेलेक्ट दोस क्लब्स. यहाँ पर फीफा यूएफए का कोएफिशिएंट्स आर गोइंग ऑन फ्रॉम इयर्स टुगेदर, सो इट्स अ वेरी फेयर थिंग स्टार्टिंग वाला क्वालिफिकेशन. व्लाहोविच, डेक्लन राइस एंड सलीबा, याया टोरे. टीम ओनर का वर्क रेट भी जबरदस्त है. याया टोरे, बाय द वे, ही वाज, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम एट सिटी टुवर्ड्स एंड. एट वर्क रेट के लिए ही वाज नॉट सो मच known, लेकिन अर्लियर इयर्स ऑफ याया टोरे, आई टोटली एग्री, ही वाज सुपर्ब. ही वाज लाइक अ बीस्ट यार. सेकंड हाफ शुरू हो रहा गाइस. सेकंड हाफ इज स्टार्टिंग बेचारा. बट एवरीवन इन द हाउस, जो भी लोग जुड़े हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कर दीजिए. अगेन पता नहीं भाई,
एक साल से सुन रहे हो आप, थंबनेल इंप्रूव करिए, थंबनेल इंप्रूव करिए. आई हैव इंप्रूव्ड गाइस. कम ऑन, कम ऑन, वी कैन डू इट. लाइक शेयर हेल्प्स द एल्गोरिथम. आ जाइए, हम भी बात करते हैं यूसीएल के बारे में. खाली 25 साल से देख रहे हो, खाली कीड़ा है बहुत सारा. और एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन ऑलमाइटी फैम, वी जस्ट डिस्कस फुटबॉल एंड टू एंड. लेकिन यहाँ पर 47-52 में हमें चेंज करना है टाइम, वापस शुरू करना है. सब लोग स्कोर प्रेडिक्शंस हो जाए क्विकली, लेट मी नो. Yeah, followed with Pep probably. So the work rate by default reduced. I get it. I get your point. Fabinho or Fernandinho? यहाँ पर I think again I would rather go with Fabinho. I don't know, maybe because of the height factor. Again, footballers wise, maybe you can argue Fernandinho is slightly better. But I think Fabinho, Monaco वाला जब आया था, just wow, what a player. United include Greenwood in the team would be a major upgrade over Anthony. अभी भी मुझे नहीं लगता they should, you know, if I'm honest. I know he was just a kid and all that. आप बोलोगे that's what Manchester United and Ratcliffe kind of indicated. I don't think so, यार. You're United at the end of the day. You don't want to, you know, send a wrong example. I know बहुत सजा मिल गई उसको, लेकिन ऊपर से you don't want to kind of, you know, set that example in my personal opinion, क्योंकि कल को कुछ भी हो जाए. 3-2 Lazio, Animesh. Pelistri or Anthony any day. Yeah, that I agree. But 3-0 Bayern victory. Karan to बोल easy one. 46-31 हुआ है मेरा गाइस. 46-32, 46-33. ठीक है सब लोग. अगेन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, सोनी लिव पर देख रहा हूँ, फॉर पीपल हु डू नॉट नो. 47-52 में करना है. लेकिन हाँ, आई वाज होपिंग कि रियल सोसिएडाड और पेरिस सेंट जर्मेन का थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग गेम होता यार. शिट मैन, बहुत ही वन साइडेड होगा. 3-0 हो गया वो एग्रीगेट. बट ये वाला अभी भी बोलता हूँ गाइस, एक गोल, वन गोल, दैट इज फुटबॉल, दैट इज यूसीएल फुटबॉल. आई नो यूसीएल में हमें मिला नहीं एक्स्ट्रा टाइम पेनल्टीज फॉर अ वाइल. थोड़ा रेडी हो जाता हूँ टाइम के लिए, एक सेकंड दीजिएगा मुझे. आई एम कमिंग टू द कमेंट्स गाइस. गेटिंग टू द 47-10 मार्क. 47-52 में हमें रीस्टार्ट करना है इस पॉइंट से. टाइम स्टैम्प just not want to miss it this time around. Last time 10 सेकंड लेट हो गया था. तो मे बी दैट्स व्हाई 10 लोग ड्रॉप हो गए थे. आई डोंट नो, जस्ट सेइंग. लेकिन you guys really think, मतलब I think today is one of the proofs that I don't think thumbnail would really help. I don't know. Again, आप मेरे दोस्त भाई हो इसलिए openly discuss करो. I know Twitter can also watch it, but I think it's a thing. मतलब again मैं जब चीजें बोलता था लोगों को अच्छा नहीं लगता था, कुछ लोगों को, that भेड़ चाल and making the rich richer and poor poorer. But it's true, bro. If you want a community to grow, you need to follow and give encouragement to everyone, and not me, every small creator as well. But कोई नहीं. यहाँ पर देखिए, बिग अप टू ऑल द क्रिएटर्स, बिग और स्मॉल, बट आई एम जस्ट सेइंग. यहाँ पर अगेन हमने भी शुरू उस समय किया था. पीपल फॉरगेट, बट इट्स ओके, वी डोंट डू. तो मेहनत तो पूरी लगती है. एंड ऑफ कोर्स बिग अप टू द ऑलमाइटी फैम टू बी हियर. केन के कितने गोल्स हो गए? ही इज लीडिंग द गोल टैली इन यूरोप, आई गेस. आई थिंक प्रोबेबली, I don't know the count. I'll just check it up. लेकिन 2 all run Bayern win at extra time. Wow. Beggars can be choosers. The Man United का kind of. Who's your favorite player in the world? Kakul, right now, my favorite player in the world. It's a very interesting question. ये तो वो लग रहा है हेरा फेरी की बिपाशा बस बोल रही है. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मस्त से. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर सी फिर हेरा फेरी में. लेकिन आप फ्री किए भाई लाजियो के लिए. एक सेकंड आ रहे हैं इस क्वेश्चन पर. Very well done by Bayern Munich. Again, it has helped the fact that though proper headers of the ball are in the box today with Eric Dyer and De Ligt. But right now, favorite player in the world, I don't know, guys. I don't know myself. People, OGs of the channel, you guys tell me. क्योंकि again, last season तक मैं बोलता था, मतलब मेरे favorite teams में, that is Chelsea and Milan में, I should always say people like Kovacic, Mason Mount, Thiago Silva, who's still there by the way, Azpilicueta, or when it came to AC Milan, obviously Rafael Leao. I don't know, मतलब ये question Kante previously. Oh, it's a very good question. मतलब almost like I'm waiting for someone to impress me. मतलब I know I'm acting भाई कोई प्रोफेसर जैसे act करो, लेकिन really मतलब I'm just waiting for someone to impress me. Like a wow factor वाला in terms of basically whom I like. मतलब बहुत good players है already, लेकिन whether I have that liking for them, that's the only thing. Big question. I myself should ask myself, man. लेकिन यहाँ पर क्रॉस है. बायर्न म्यूनिख सेकंड बॉल जीती है इन द बॉक्स. 3 people of Lazio there, और वो क्लियर करते जस्ट अबाउट. मास्करानो, ब्रिलियंट वर्क रेट, ब्रिलियंट शाउट यार.
Again, played DM, played center back. Absolutely, मतलब बहुत सताया चेल्सी को while in Liverpool days as well. We should stick with Garnacho on the right wing. हाँ, अभी के लिए that's true. Chelsea fans should learn from this. Bayern fans look at them despite so many background. बिल्कुल कि किन लोग ने वो देखा था भाई जहां अल्ट्रा आकर बात कर रही है. जर्मन फुटबॉल फैंस रेस्पेक्ट मैन. या एग्जैक्टली बारसा यूनिवर्सल. समझदार को इशारा काफी है. सिंपल एज दैट. बट कोई नहीं, अपन तो करते रहेंगे भाई. पैशन, मेहनत, सब चीज है. आई बिलीव नॉलेज भी है. हम घंटा नहीं जानते. सर्टनली अखाड़े में आ जाए, नहीं तो कोई भी अगर किसी को लगता है तो. फोर्डन, वाओ, फोर्डन या ही इज राइट अप देयर इन टर्म्स ऑफ प्लेयर. लेकिन वो ये फेवरेट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हु इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड वर्सेस हु इज योर फेवरेट प्लेयर. आई थिंक दैट्स व्हाट द क्वेश्चन वाज. मतलब आई एम नॉट, मतलब वही है, मतलब आई वांट टू हैव अ फेवरेट प्लेयर राइट नाउ. आई यूज्ड टू हैव सो मेनी पीपल हु आई लव्ड, लेकिन नॉट एनी मोर बिकॉज दे मूव्ड ऑन फ्रॉम माय फेवरेट टीम्स. ये रीजन है. कॉनर गैलेगर, चलो मुजाहिद भाई ने बोल दिया, ही रीड्स माय माइंड एंड प्रोबब्ली इज राइट. कॉनर गैलेगर इज समवन दैट आई लाइक द पैशन एंड ऑफ कोर्स ही इज इंप्रूव्ड ऑन हिज फुटबॉल. लेकिन फेवरेट टैग मैं अभी भी नहीं दूंगा उसको. थियागो सिल्वा प्रोबब्ली जस्ट अबाउट स्टिल हैज इट, इवन दो वो ओल्ड हो रहा है. आई नो दैट. यप कोबरा, यू राइट. काफी लोग मुझे फीडबैक दिए थे, इसलिए आई काइंड ऑफ वर्कड ऑन इट. लेट्स सी, विल कंटिन्यू, विल स्टिल कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम. होपफुली पीपल विल रियलाइज एट द एंड ऑफ द डे. मैं जो बोलता था ना, ऐसे नहीं बोलता था. भेड़ चाल है भाई, और पीपल डिजर्व अ भेड़ चाल बाय द वे. सम पीपल, नॉट एवरीवन दो, बट कोई नहीं. इफ आई स्पीक आई विल बी इन ट्रबल. Gavi is right up there. You know what? Barcelona was although not a Chelsea player, not a Milan player. यहाँ पर रे भाई, is it a penalty? Is it a penalty? I think VR को जाएगा. Eric Dyer with a very heavy challenge on Immobile. Immobile ऐसे गिर गया जैसे कि पता नहीं क्या World War 3 कर दिया Eric Dyer ने उसके साथ. लेकिन VR चेक 100% होना चाहिए. Although follow up ही था. Eric Dyer, Delict was already there by the way. अच्छा, it was not Eric Dyer, sorry, it was Delict as only. My bad. Delict ही था. Not a penalty. Not a penalty. Referee, not a penalty. Clear not a penalty. बंदा अपने आप ही मारेगा Delict के पैरों में. Very good. Standing his foot, standing his ground was Matthias Delict. Rafael Leao, हाँ, he is right up there. जैसे मैंने बोला था last season he was, but is Rafael Leao the same player that he was last season and a half जब we won the Scudetto still? I think he's not that influential anymore. He is great, but not that. Yes, this is the answer. Actually, this is the answer. Reece James is the answer, but वही है, एक साल के लिए खेला नहीं अभिषेक, तो थोड़ा सा out of syllabus हो जाता आंसर. 80 in the house. 80, what's up bro? What's up? Ready for next week? I know not great times for Barca in terms of injuries, but pretty sure Napoli game will be huge, bro. What is your call about Napoli game, AD? By the way, people do check out 8744, my buddy. Of course, our pawn in the house. He also creates content. काफी दिन हो गए. We have not spoken to AD. Always love his thoughts, but let me know AD for sure. KDP भैया, I think is your favorite currently. नहीं यार, he's the best player for me. He's among the best player for me. He's unplayable. But do I like him? You know what I mean? वो liking नहीं है यार. I don't think there's a liking. मतलब hate भी नहीं है. People भाई Man City fans यहाँ पर अलग ही बोल देंगे भाई ये बंदा तो hate करता no. How can I hate someone who's played for Chelsea? And of course Chelsea की mistake थी, we let him go rather than him going. So I don't think I can hate him, and plus his class is superb. But I didn't mind him going away in the Champions League final in 2021 thanks to कांटे. गोल आने वाला है फार पोस्ट में, मिडिल में मिस किया है इन द बॉक्स क्रॉस को बायर्न म्यूनिख ने फार पोस्ट में. आई थिंक इट वाज नो वन वाज रीडिंग. मुसियाला, व्हाट अ शॉट बाय मुसियाला, जस्ट वाइड गाइस. या क्वालिटी वाइज क्रूज, केडीबी, मॉड्रिच. यू नो व्हाट, इफ यू रियली आस्क मी प्रोफाइल ऑफ प्लेयर ना, गावी और मॉड्रिच. अगेन गावी इज यंग, मॉड्रिच इज वेरी एक्सपीरियंस. उल्टा बोल रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली मॉड्रिच इज अ फार बेटर प्लेयर, नो टू वेज अबाउट इट. यहाँ पर मैं कंपेयर नहीं कर रहा. बिफोर पीपल थिंक आई एम कंपेयरिंग, मॉड्रिच इज ऑब्वियसली फार बेटर. लेकिन कहीं ना कहीं मॉड्रिच का प्लेयर इन गावीज एज, दैट इज अ प्रोफाइल ऑफ प्लेयर दैट इज माय आइडियल प्लेयर. लेट मी पुट इट दिस वे. Gavi plays with his heart, is a short guy but jumps higher than center back. बिल्कुल. Again, he gets a lot of hate. Barca Universal. I cannot understand why he gets a lot of hate. I know कुछ ज्यादा ही देता है कभी कभी, और कुछ कभी कभी हो जाता है over the top. But come on. I think again, Katra is not too far. अपना Galadog.
जब Gerrard slip हुआ था and Dembaba scored, Salah also celebrated the team. हाँ, of course he should have because he was a Chelsea player, bro. Why shouldn't he? Of course he should have, man. बिल्कुल. In fact, Liverpool were also trying for him. हमने उस समय काफी सारे ट्रांसफर जीते थे. I remember Willian, Salah, other teams wanted, and we kind of won those transfers, and we had that pull. We have kind of lost it in recent times, to be honest. Although I know Caicedo और Lavia आए थे, but that's a little bit different, I feel. लेकिन जस्ट फॉर द क्लब वो आए थे ना, वो वाला अलग ही चीज था. मतलब विलियन एंड साला काइंड ऑफ पीपल, यू नो, दे जस्ट केम टू चेल्सी. सिंपल. Fabregas as well, by the way. Fabregas, he chose Chelsea, I believe, over Arsenal, right? Second time around. Do you think our Fabregas in Arsenal was today's Bellingham? Not really. Not really. Fabregas ज़्यादा arrive करता था box में. He was more like yesterday's Bellingham. What I mean is Dortmund वाला Bellingham था ज़्यादा. He was better than Bellingham in terms of Dortmund वाला quality, but in terms of player profile वो था. He used to play proper center midfield, bro, end to end, जैसे young Lampard बोलो. But obviously Lampard was a better player because Fabregas is way too young when Lampard was at that point at that year. तो वो था. लेकिन हाँ, of course Fabregas was a beautiful player, young captain for Arsenal. अरे राइट विंग में ओपन अप हुआ है बायर्न म्यूनिख के लिए अटैक. क्या करेगा? किमिक क्रॉस डाला है, बट देयर इज नो वन इन द बॉक्स. व्हाई इज देयर नो वन इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स? आई डोंट अंडरस्टैंड. Jackson is the best player, bro. No debate right now. Harsha, man, if you know. Simple. I got that. He's too good. Maybe, I don't know. मुझे नहीं लगता बारसा will go through. Oh, this could be a possibility. We'll discuss, of course, next week हम discuss करेंगे मुजाहिद भाई. By the way, I wanted to call a Barca panel यार आज, लेकिन I believe बाहर थे वो तो आ नहीं पाए. लेकिन hopefully we'll do a stream with Barca. I know it's been a while, we have done a Barca stream as well. लेकिन कोई नहीं, आजकल थोड़ा दुख दर्द पीड़ा ज्यादा हो रहा है चेल्सी का. तो मिलान, बारसा, रियल मैड्रिड का आज थोड़ा बहुत किए, मैन सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का कल किए थे, बट कोई नहीं. ऑलमाइटी ब्लूज चेक करिए फॉर पीपल हु मिस्ड इट. लेफ्ट विंग हो सकता है लाजियो गेट्स एन ओपनिंग गाइस. 58 मिनट्स हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और दे विन अ थ्रो इन. पेलेग्रिनी, Bayern doing park the bus. But the thing is, they don't need to, na. मतलब I know tactically it's not wrong, but they don't really need to do that. ऑल गुड भाई, ऑल गुड. अभिषेक ऑफ स्ट्रीम, ऑल गुड. बात करते हैं. अरे यार अभिषेक याद आया उससे. Who am I, bro? Again, you're already there in the next stage, of course, in the semis, right? You are, if I'm not wrong. But we have to do that as well. People who are interested, of course, IPL ka content we have started already on Almighty Sports. Quiz shows, again, the season has re-begun in terms of who am I on Almighty Blues. क्रिकेट का भी हो मैं करना है, क्रिकेट का हो मैं सेट करने का बहुत टाइम लगता है अभिषेक, डिफिकल्ट है. इज देयर एनीवन इन द चैट हु वुड लाइक टू हेल्प मी आउट? मतलब जस्ट कोई मतलब इंटरेस्ट रखता है, जस्ट वॉलंटियरली, इट्स ओपन, आई एम नॉट आस्किंग. करना तो कर सकते हैं, इट विल बी ग्रेट. जस्ट टू काइंड ऑफ सेट क्वेश्चंस एटसेट्रा, जो मैं करता हूँ में. यहाँ पर अच्छा काउंटर लेफ्ट. ओ गुरेरो, ऑलमोस्ट अ गोल यार, वाइड गया, गेटिंग अ बॉल फ्रॉम केन. लेट मी नो गाइस इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड. अगेन अभिषेक और सादिक भाई को तो नहीं बोलेंगे. अभिषेक और सादिक भाई तो नेक्स्ट लेवल है ब्रो. मैं और बाबा थोड़े नीचे आते हैं उनसे, इन माय ओपिनियन. आई रिमेंबर कौन, निधि, मैं और बाबा इज लाइक ओके फाइन, मोक भाई वी नो, बट आई थिंक सादिक भाई एंड अभिषेक, आई वुड पॉइंट इट आउट, दे आर लाइक नेक्स्ट लेवल ब्रो. By photographic memory, even I have watched lot of football, lot of cricket, bro. Mid 90s, late 90s, early 2000s सब देखा है मैंने, चार्ट लिया. लेकिन फोटोग्राफिक मेमोरी है भाई बंदों का. बिग अप टू अभिषेक मैन. बुलाया था यार, रिसेंटली बुलाया था. मैंने बोला भी था उन्हें, लेकिन मे बी इज बिजी. स्नेहिल एब्सोल्युटली ओपन, ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन मेरे भाई. अगेन एट द एंड ऑफ द डे वी कैन ओनली रिक्वेस्ट, एंड अगर वो अवेलेबल नहीं तो वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट, राइट? दैट्स द ओनली थिंग. तो अगेन we try and rotate the panel, we try and call everyone. That's always the case. Watch alongs में I like to kind of watch with you guys, unless basically मैं बहुत nervous हो रहा हूँ, जो Chelsea final वाला दिन था and all that. That's how it is. Abhishek knows that. But yeah, I was told, पता नहीं, because ये clips थोड़े बहुत websites में we are honored enough to be used by other websites, other channels. They put it.
So I believe it looks better the reactions if I'm alone is what I've been told. I don't know if it's right, but आप लोग बोलिए. I am open to either ways. लेकिन हाँ, वॉच अलोंग में जनरली आई प्रेफर अलोन इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. ब्रदर टू ब्रदर टॉक हो रहा है एज मच एज आई डोंट माइंड एनीवन. खाली वॉच अलोंग में. व्हाई? बिकॉज वो जो क्राउड का एटमोस्फियर में आई एम नॉट लिसनिंग बिकॉज ऑफ कमेंट्री. ये जो लगा है ना, आई एम लिसनिंग बिकॉज ऑफ वो क्राउड का जो साउंड होता है ना, दैट आई हैव ऑलवेज काइंड ऑफ वॉच फुटबॉल लाइक दैट वे. सो फॉर मी दैट गिव्स अ डिफरेंट वाइब. आई डोंट नो. Oh, okay. I get it now. I get it. Absolutely. Yes, that's true. And I know Abhishek का feel. Absolutely, that's true. लेकिन एम्बापे गोल गाइस खत्म. चलो भाई डबल खत्म कर देते. चलो 56 मिनट गोल एम्बापे खत्म. बाय बाय टाटा गुड बाय गया. Immobile substituted. What's happening? What is Sarri? What's he smoking, bro? I know Immobile ने मिस किया था एक चांस. I totally get it. और बहुत work rate, try to keep the ball, etc. किया है, off the ball work and all that. And I know that he's not at that age anymore. But खाली 60 minutes in a do or die match, in a do or die situation. Really? I don't think so. It's right. Do you guys agree with that? Immobile coming off for Lazio, guys. Isaacson, he gives you some pace and trickery on the wings. Absolutely. वो एक important player है. He generally starts, by the way. लेकिन जो बंदा जकागनी गया है, he put in a great potential assist ball to Immobile जो मिस किया था header, remember that. लेकिन हाँ, Bayern Munich not making any changes interestingly despite having injuries recent weeks में. हो सकता है people returning from injury, so he doesn't want to take the chance. But at the same time, हो सकता है it goes to extra time, so you want to save your subs. लेकिन 5 substitutions होते हैं. So I think I don't know. Bayern Munich में should they make a change? 62nd minute हो रहा है, guys. Why is Tuchel doing a Potter? मतलब is there a necessity for a change when you're winning 2-0 at home? Probably not. But don't you think बहुत ज़्यादा work rate मुलर के लिए? I know it's an experienced player और of course दोनों goals में involved था. But I think Muller probably deserves to come off and क्योंकि Lazio थोड़ा attack करेगी, it makes sense to bring on either of Choupo-Moting या Matthias Chell. क्योंकि सर्ज गनाब्री जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, वो लास्ट मिनट्स के लिए आएगा. आई डोंट नो, दैट्स माय कॉल. आप लोग बोलिएगा इफ एनीवन एग्रीज और डिसएग्रीज. बुलाते यार, क्यों नहीं बुलाते भाई? ऐसे अफवाह मत, मतलब अफवाह नहीं. आई नो कोबरा इज माय ब्रदर. डू नॉट ट्राई टू इवन पुट दिस कमेंट बिकॉज़ पीपल मिसअंडरस्टैंड. कुछ नहीं, बात हुई थी यार 2 दिन पहले. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, नो, वी हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स टाइम एज वेल, और एवरीवन हैज द प्रायोरिटीज ब्रो. we can request and at the same time हम भी रोटेट करना चाहते हैं. एक और ये फैक्ट बोलता हूँ कोबरा, द फैक्ट इज, मैं खुद ही बोला हूँ चेल्सी क्रिएटर्स के साथ कि यार चेल्सी क्रिएटर्स हम जब मिलते हैं ना तो थोड़ा डिप्रेशन वाला माहौल हो जाता है. big up to all of them. I love them. They're my brothers from another mother. लेकिन the reality is this, थोड़ा सा वो मस्ती मजाक थोड़ा कम हो रहा है because the reason आजकल is because चेल्सी इतने बुरे हाल में ना कि बाय डिफॉल्ट सबकॉन्शियसली वही टॉपिक आ जाता है. तो हम बात करना चाहते हैं यूसीएल के, यूरोस के, आ जाते हैं हम चेल्सी पर. यू नो व्हाट आई मीन. दो चेल्सी भाई मिलते तो वही होता है. as much as you want to do that and you cannot avoid that. Absolutely. सिगार में क्या डाल के फूक रहा है. ओ होपफुली कोई मिलान का कंटेंट क्रिएटर आ जाए भाई. हम तैयार है भाई स्नेहल, हम तैयार है. प्रॉब्लम है कि हमें बैकिंग नहीं मिलती स्नेहल. आप कम्युनिटी क्रिएट करिए. Definitely I'm on bro, bring it on. I am ready to do every Milan match. लेकिन हमने ट्राई किया है for a good while last year and a half के बीच में, in at least big matches, and we didn't get the love that I think we deserve. Even in big matches, again with all due respect to bigger creators, because they're bigger in terms of numbers and of course in terms of, I don't know, maybe just bakchodi which people think we don't do, they go there. I don't know, मतलब people need to give me feedback. But कुछ लोग बोलते थंबनेल्स, बट नाउ अब वो भी अपग्रेड कर दिए, तो आई डोंट नो, लेट्स सी. शॉर्ट्स भी आज अच्छा शॉर्ट डाला तो बहुत अच्छा इन माय ओपिनियन, बट पीपल, लेट्स सी, होपफुली विल गेट देयर. Zakagni is good. I don't know. I've not really followed him very closely, if I'm honest, Pudin. Big up to you. PSG is scary in transition. Barca Universal बोल रहे हैं, and Serie A में यार Abhishek, if you know. To be honest, Barcola is one guy. हमने, remember we used to scout. We had scouted Barcola so last summer में. We had scouted कौन है बंदा वो, योहान बाकायोको जो खेलेगा नेक्स्ट वीक पीएसवी के लिए. तो we had scouted certain wingers. I remember लियोन का बंदा कौन है, अभिषेक पुदिन, that we were badly linked with and we had done scouting
एक टैक्टिकल स्ट्रीम भी किए थे, जस्ट दोज मिडफील्ड स्ट्रीम। आई रिमेंबर एक डिफेंडर स्ट्रीम किए थे, एक मिडफील्डर स्ट्रीम किए थे, एक अटैकर स्ट्रीम किए थे हम लोग समर में। कौन है भाई बंदा जो इस सीजन चला नहीं, इतना नाम भूल गया, चेयर की, रायन चेयर की, यस एग्जैक्टली, थैंक्स अभिषेक। No problem, Snehal. Absolutely, we have to do that. And no irony है Snehal, people who actually started following football ना, मतलब obviously ब्राजील अर्जेंटीना से ही हुआ था, लेकिन और नाइस शॉट बाय साने और गोल आने वाला है। इज इट नॉट ऑफसाइड? नो, केन स्कोर्स, दैट्स अ ब्रेस गाइस, दैट इज अ ब्रेस एंड साने फॉर वन स्टैंड्स अप, नाइस शॉट बाय साने, कर्लर, गोलकीपर प्रोबब्ली couldn't do much and rebound आता है केन को at the far post, puts it back in और it is 3-0। और इस बार अनफॉर्चुनेटली लाजियो के लिए खत्म, और इसलिए मैं बोल रहा था as much as तब भी हारते, इमोबिले को taking off was not in bro। Again, well done by Sane यार, well done by Sane। Robin is kind of a shot, लेकिन probably should be doing better in my opinion, as much as it was not an easy save। parry down किया, लेकिन rebound गया directly to Kane waiting at the far post or back in from the left foot, boom, Kane ka brace and Bayern are next। or Bayern, what crisis bro, what crisis, Tuchel, what crisis bro, all of a sudden Bayern Munich are having 1 foot and a half in the quarterfinals of the UEFA Champions League 2023-2024 guys। quarterfinals, semi-finals, finals, 5 गेम इस बायर्न म्यूनिख, दिस करंट स्क्वाड, एज दो ऑल्दो ये अच्छा नहीं है फॉर्म और इंजरीज है और टूकल बढ़िया नहीं कर रहा मैच, बट लेट्स बी रियल, 5 गेम्स फॉर बायर्न म्यूनिख, इट इज पॉसिबल गाइस, इट इज पॉसिबल। अनिमेश, मैंने बोला तो है कि मैं करूंगा, नाउ आई एम इन टू थॉट्स ब्रो अनिमेश, आई डोंट नो, क्योंकि वी ट्राई आवर बेस्ट टू डू ऑल कंटेंट ऑलवेज एंड ऑलवेज, मतलब 2020 यूरोज से हम कवर कर रहे हैं, व्हेन पीपल यूज्ड टू नॉट इवन डू इट, लिटरली एवरी गेम डे वी यूज्ड टू डू यार, एवरी मैच डे वी यूज्ड टू डू यूसीएल का 2020 से, लेकिन पीपल हैव फॉरगॉटन दैट, ओजीज ऑफ द चैनल हैव गॉन एंड पीपल सेड अपग्रेड द थंबनेल, अपग्रेड द शॉर्ट, सब चीज किया है, मतलब इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट with all your help and praise of course, but interest से करते हैं, लेकिन आज थोड़ा हेजिटेंसी हो रही है, क्योंकि क्या होता है ना, and the fact is, as much as people might feel it's easy, but again just bro to bro यार, मतलब when you're 36, 37, 38, it's not easy bro to kind of do it daily, watch along entirely and set up the entire thing on your own, bindas non-stop content in both the channels, when at especially 3:30 a.m. in the morning, that's the only thing, or especially when there are, again, big up to the six people who are watching, just telling। So I'm in 2 minds again, aap log boliye, I might do it on Almighty Blues though, I might just do it, maybe Animesh, I might do it, I might put a poll, dekhte hain। You think Neuer should play in Euros or Ter Stegen should start? I think right now डेफिनेटली मैं बोलता हूँ, कंसिडरिंग टर स्टेगन भी इंजरी से वापस आ रहा है पुदिन, तो आई थिंक कहीं ना कहीं द जूरी इज आउट। टर स्टेगन वाज फार बेटर देन नॉयर लास्ट से 7-8 मंथ्स बिफोर इंजरी, लेकिन उसके पहले ऑब्वियसली नॉयर इज द गोट, लेट्स बी रियल, इज द गोट गोलकीपर है भाई डायरेक्टली, और ऑफ कोर्स लीडर है, तो आई थिंक नॉयर ही शुरू करेगा बाय डिफॉल्ट इफ इज फिट, बट कहीं ना कहीं जूरी इज आल्सो आउट। अगर टर स्टेगन हैज लाइक सेंसेशनल लास्ट 2.5 मंथ्स लाइक ही हैड the previous 7 months before injury, then for all we know that might be the answer। कल का मैं, हाँ, even I feel it's one sided, but I thought of figuring it out। मेन चैनल में करेंगे, चलो मेन चैनल में करेंगे इस बार ट्राई अगेन। सो सैड, गुंडोगन को कैप्टन से क्रूज को देगा, नहीं तो नॉयर को, ठीक है यार पुदिन, कैप्टेंसी फुटबॉल में कैप्टेंसी आई डोंट थिंक इज सच अ बिग डील, मतलब इन माय पर्सनल ओपिनियन, फुटबॉल में कोच इज द मेन मैन ब्रो, क्रिकेट में कैप्टेंसी मैटर्स मोर इन माय ओपिनियन, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट नो, बट ठीक है। सॉरी गाइस, आई हैड टू ड्रिंक दैट नॉन स्टॉप, बैक टू बैक रहा थोड़ा। अगेन आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मैच टू गेट ओवर, टू बी ऑनेस्ट। Seriously, as much as I love the football, मैच इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा, I'll be very honest। PSG वाले मैच में क्या हो रहा है, कुछ हुआ है गड़बड़? नहीं, रेड कार्ड हो जाएगा, एटलीस्ट मजा आ जाएगा थोड़ा।
सॉरी, आई नो बायर्न फैंस चिल्लाएंगे हम पर, पीएसजी फैंस कोई है तो चिल्लाएंगे, बट थोड़ा रेड कार्ड जो है, इंजरी नहीं चाहिए, थोड़ा रेड कार्ड हो जाए, ड्रामा चाहिए, क्या बोलती जनता, ड्रामा. If Nuno Mendes is fit, he's the best left back. हाँ, again, if Reece James is fit, he is probably the best right back. But वही ifs and buts में नहीं जीत सकते ना. हाँ, नूनो मेंडेस लेकिन इतना लंबा इंजरी नहीं हुआ है, लेकिन उसका भी लंबा इंजरी हुआ है बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी का कैप्टन चिलवेल है. अभिषेक याद दिला रहा है. Before Almighty Blues, the same channel was called RCB and Chelsea Fan TV. We used to have two channels. So पहले RCB and Chelsea Fan TV में हम करते थे दोनों क्रिकेट और फुटबॉल, Scouser Unscripted. That was back in 2021, Euro 2020s and all we covered. It was called RCB and Chelsea Fan TV. तो वहां पर obviously the name suggests Chelsea और RCB का content होता था, with a little bit of Indian cricket team content and of course Indian football team content a little bit. अरे नाइस थ्रू बॉल, एक सेकंड, थॉमस मुलर और सेव मैन, प्रोविडल, व्हाट अ सेव मैन, व्हाट अ ब्रिलियंट सेव, ऑसम सेव. चलो कोई नहीं, थ्रो इन है फॉर बायर्न. हाँ, तो 2021 में था. देन वी रीनेम्ड इनटू ऑलमाइटी ब्लूज एंड वी ओपनड अ डिफरेंट, तो खाली फुटबॉल का करने लगे वहां पर, और ऑलमाइटी स्पोर्ट्स में ब्रिलियंट शॉट बाय साने, कट इन करके मिड से फ्रॉम लाइक रॉबिन और साला, बट नहीं, गोल नहीं हुआ, वाइड. तो 2022 में बिगिनिंग में वी चेंज इट टू ऑलमाइटी ब्लूज, that is 2.5 years back almost, and we made a different channel called Almighty Sports, which is where you're watching it. I think around that, around that ही, because यहाँ पर ज़्यादा क्रिकेट एंड थोड़ा बहुत न्यूट्रल फुटबॉल कंटेंट इज व्हाट द आइडिया इज, और वहाँ पर इट्स मोर लाइक द प्रॉपर फुटबॉल कंटेंट. विदाउट चेल्सी आई वुड पुट इवन लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड. हाँ, बट एक टाइम पास चैनल पहले भी था, इंडियन चेल्सी फैन, दैट वाज वे बैक. You can check it out. It'll be funny, I know, but it was long back. अरे भाई, एंडरसन, नाइस क्रॉस. Oh, Alberto almost getting a goal, bro. Alberto wins a corner. Deflection और सेव था क्या? ये राउंड ऑफ 16 देख के लग रहा है न्यू यूसीएल फॉर्मेट इज इन द वर्स्ट. याप एब्सोल्युटली. द मोर क्लोज गेम्स देयर आर, और द मोर डिफरेंट गेम्स देयर आर, तो ज्यादा अनप्रेडिक्टेबली बढ़ती है. I'll see if Fateh can join us tomorrow. आज मैंने मैसेज किया था, बट आई थिंक ही हैड अ लॉन्ग डे. फतेह ओपी हो जाए, फतेह देख रहे तो आ जाओ यार. नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट है फतेह के लिए भाई, इंटर मिलान फैन, बट कोई नहीं. एल्बर्टो भाई, मुलर भाई 73 मिनट्स, क्या एनर्जी है भाई अभी तक. आई हैव टू से इट. एज मच एज लुइस एल्बर्टो भी अच्छा कर रहा है इन द लास्ट फ्यू मिनट्स, but it's all Lazio just trying to open Bayern, or Bayern are like close up shop. Proper old Jose school or Tuchel school से खेल रहे Bayern. We know that. Om is back. What's up, Om? Indian Chelsea fan. It was way back. It was like ऐसे टाइम पास के लिए करता था, जब मैंने कुछ मालूम ही नहीं था YouTube का. और it was in 2000 and I think it was that season यार, जहां हम जीत रहे थे फिर 2016 कॉन्टे का सीजन, जस्ट जब आया था कॉन्टे नया नया. मैंने शेयर भी किया इनिशियल वीडियोस ऑफ दिस ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज में, मैंने लिंक भी डाला था, लेकिन पीपल नॉट इंटरेस्टेड. ठीक है, ओनली वेरी फ्यू वीडियोस है, वेरी फनी था, बट कोई नहीं. बट दैट वाज वे बैक, लाइक आई सेड. स्वानजी का पता नहीं यार, पुदन. टू बी ऑनेस्ट ना, चेल्सी के इतने सारे जर्नलिस्ट हैं, उनके पास काम दाम है नहीं. चेल्सी इज गुड फॉर नथिंग राइट नाउ, एज मच एज आई लव माय क्लब एज अ टीम, एंड वी हैव टू क्रिएट न्यूज बिकॉज दैट इज द जॉब. तो वो लोग ये डिबेट क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं है. आई नो, सब मतलब देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, विदिन समथिंग ऑफ इट इज अ फैक्ट. लेकिन कुछ ऐसी हाइप हो रहे एंड पीपल आर डिस्कसिंग एंड डिबेटिंग एंड कन्वर्सिंग. सोशल मीडिया पागल हो गई, माता आ गई चेल्सी के. छक्का मार जो, चार बढ़िया छक्का भाई. Kane proves it that he's also a cricket player. Now it proves it. What a brilliant shot by Kane over the top of the stadium, man. लेकिन हाँ, एम्बापे भाई बोलना पड़ेगा that Real Madrid, if I speak I'll be in trouble.
Same old trick he uses every time. That's the thing. Again, हर चीज में रॉबिन डालता हूँ, लेकिन रॉबिन was a winger, I know more. लेकिन रॉबिन was so predictable but yet so good. Not Pedro on the pitch. Come on, Pedro. Bhai, Barcelona days is a very good. Absolutely, that's his cream. But come on, man, the guy is actually won a Premier League, man. Just saying. Again, the season he came, I remember it was Mourinho's season, second stint में. But oh, bad challenge. Pretty sure Lazio's free kick. क्यों भाई, क्या किया आपने? ऐसा क्या कर दिया आपने? क्या चला रहे थे भाई आपने इंस्टाग्राम अकाउंट में? बोलिएगा थोड़ा. All good. Instagram चल नहीं रहा था. By the way, I don't know if it's that. Actually, Instagram just wasn't working. That was also a case. Anyway, let's go, guys. Yeah, isn't the guy taking? Does he? I'm not sure. Yeah, पता नहीं. I got crashed in the evening, so I don't know. अनिमेश यहाँ क्या बोल रहा है? अनिमेश बोल रहे हैं यहाँ फ्री किक का वेट करते हैं. Madrid get Mbappe. Should they go for 4-3-3? I think that should work with the best for Mbappe. फ्री किक दे दिया भाई लाजियो ने. यार यार. Yeah, so they should play 4-3-3. Mbappe, for him to work, for me, Mbappe, even under Tuchel, people criticize, in my opinion, that worked. Of course, people forget Tuchel reached the Champions League final. Neymar, Mbappe, and all did not do too badly. In my opinion, 4-3-3 works. Again, going back to the French teams. France team में क्या था? If I remember right, Kante, Pogba, or Matuidi in midfield. Correct me if I'm wrong, Animesh, or anyone in the chat. Right? Matuidi था, कांटे और पॉग्बा. वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप जो जीता था वहां पर. तो भाई बेसिकली एम्बापे वर्क्स इन 4-3-3 मोर इन माय ओपिनियन. और कहीं ना कहीं डायनेमिक पोजीशन, एकदम लेफ्ट साइड भी नहीं, लेकिन डायनेमिक रहता वो. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है ना निमश, जूड बेलिंगम ने कर दिया है, मतलब बवाल मचा दिया है. तो जूड बेलिंगम जिस प्रकार बवाल मचा है उस पर यू कैन नॉट हेल्प बट स्टिक टू अ 4-2-3-1 और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यू हैव टू गेट हिज गोल्स और आप मिस करोगे नहीं तो वो. एज मच एज ही प्लेज एज द नंबर 8 एंड स्टिल विल गेट इन द बॉक्स, आई नो दैट. भाई सब लोग किधर हो भाई? सब लोग क्या बात है? इंडिया में खाली 2 चैनल बचे क्या? 3 चैनल बचे क्या? बिग अप टू देम यार. मे बी आई शुड लर्न फ्रॉम देम जस्ट अबाउट doing content for the same period, but maybe I need to pick more, or following football for just about 10 more years, but it doesn't matter. Thomas Muller off, guys. Matthias Tel on. Again a criticism I remember Tuchel के लिए. 78 minutes Matthias Tel comes on. Yes, 3-0 है, लीड अच्छा था बायर्न का. They could have got him on 65, 67, 68 minutes में, लेकिन Tuchel believes that नहीं, an extra cushion चाहिए और थोड़ा सेफ खेलता है, स्पेशली इन चैंपियंस लीग गेम्स. सो आई गेट दैट टू सम एक्सटेंट, स्पेशली उसका जब जॉब का चल रहा है अभी. बोरिंग तो हो गया मैच, दैट्स फॉर ट्रू, दैट्स सो ट्रू. बट होपफुली ये 12 मिनट में कुछ ड्रामा मिले यार. वी ऑलवेज लाइक टू सी ड्रामा नो मैटर व्हाट. कॉर्नर है, चलो देवाना कॉर्नर गाइस. लाजियो गॉट अ कॉर्नर. मुलर मैन ऑफ द मैच गाइस, प्रीटी श्योर. राफेल गुरेरो बहुत अच्छा था. आई नो 80 मिनट्स ही हो रहे हैं, 79 मिनट्स हुए इनफैक्ट खाली, लेकिन प्रीटी श्योर मुलर मैन ऑफ द मैच मिलेगा कंसिडरिंग दोनों गोल्स में वो इन्वॉल्व था. बट केन ऑब्वियसली दोनों को 2 गोल मारा है. आई डोंट नो, मतलब क्या बोलोगे? राफेल गुरेरो, मुलर या केन मैन ऑफ द मैच? एवरीवन, आई वुड गिव इट टू मुलर. लेकिन हाँ, वो फिनिश नहीं किया है मैच. केन शायद फिनिश करेगा, तो मे बी केन गेट्स इट. चलो आ गया भाई जो बंदा हम चाह रहे थे, एसी मिलान फैंस. कमाडा कम्स इन गाइस. अगेन वेरी डिसअपॉइंटिंग इफ यू आर अ लाजियो फैन. कमाडा, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके बाद. Do you think Davis will join Madrid? Unfortunately, yes. As much as they have a Fran Garcia, they have a Mendy.
फिर भी वो लोग साइन कर लेंगे बिकॉज दे आर रियल मैड्रिड. देखो भाई, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिक, द ओल्ड स्कूल बार्सिलोना, द ओल्ड स्कूल यूवेंटस, व्हेन दे केम कॉलिंग, नो, एकदम ओल्ड स्कूल आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड उस समय, तो चेल्सी ऑफ द मिड 2000s, तो प्लेयर्स मना नहीं करते थे. सिंपल सी बात है. बट मैड्रिड नेक्स्ट लेवल, आज के दिन में मैन सिटी नेक्स्ट लेवल, दैट्स द रियलिटी पुदन. तो ही विल गो फ्रॉम बायर्न म्यूनिक. रोमानियोली भाई, रोमानियोली, ऑफ कोर्स ओजीज विल नो हिम ऑब्वियसली. मी इज मैन ऑफ द मैच. इस मैच से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो इंडियन चेल्सी फैन चैनल है. अरे भाई साहब, हाँ, स्नेहिल ने टच चेकआउट कर लिया भाई. स्नेहिल बहुत ही एकदम ही बहुत ही ज्यादा रॉ हूं उस समय. एट द सेम टाइम इट इज जस्ट प्योर फैन वाइब, आई बिलीव. और खाली इंग्लिश में बात करते हो उस समय, इफ आई रिमेंबर राइट. वेरी बेसिक ग्राफिक्स एंड ऑल दैट, आई रिमेंबर दैट एब्सोल्युटली. इनफैक्ट ऑलमाइटी ब्लूज की आप देखो तो पहले 4 वीडियोस देखकर आप भी शॉक हो जाओगे. पहले 4-5, आई डोंट वांट पीपल टू वॉच दैट बिकॉज इट्स एम्बैरेसिंग फॉर मी, बट आई एम जस्ट सेइंग क्योंकि लिटरली ट्रायल एंड एरर experimentation COVID times, you know. Yeah, enthusiasm was definitely on, man. It's still on, luckily, touch wood. Romagnoli, AC Milan, yes, AC Milan. To be honest, Italy में बहुत होता है यार ये. That's the thing. One thing I don't like, that players moving and managers moving from one club to the other. I don't like it. That's the thing. But ठीक है, मतलब he did his part यार. मतलब I don't think it was up to the mark. We all know that. But कोई नहीं. Yep. Musiala having the ball. भाई मैं देखे नहीं. ये थोड़ा क्वेश्चन है टूकल. Don't you think Musiala also deserves the rest now? I know 2-goal lead is never safe. 82 minutes हो रहे भाई. आप, I know 10 points away from Bayer Leverkusen हो, but you have got to try that. I don't know. Musiala आपका मेन बंदा है. मैं एक्चुअली होता तो I would actually sub off Musiala as well, and I would get on Choupo-Moting. I don't know how many of you all agree with that comment. क्योंकि 8 minutes से 2-goal lead, Bayern Munich at home. Come on. I know not everyone is a Drogba and scoring a last-minute equalizer. What do you say? And not everyone is a Torres to win the corner or Mata to take that corner. Goosebumps, yaar. These are moments which keep me alive, man. Tuchel पागल हो गया क्या? To be honest, ये मेरी खुद की आदत होती थी. All my friends and my colleagues always used to observe this. I used to speak to myself when I'm working and all, no? When I'm working or basically focusing on something, I try and speak to myself. Absolutely. Of course, that header, man. Drogba. लेकिन हाँ काउंटर आ रहा है बायर्न म्यूनिख का. Lazio has been so disappointing this season, यार. सारी खत्म हो गया बस. You will never see Barca, Real Madrid doing player exchanges and coaches exchange. This is called real rivalry. Yeah, and again होता है लेकिन बहुत rare होता है, इसलिए वो players are not liked by one of the two sides. Barca, Universal, I get a point totally, मेरे भाई. Totally. Again, why do you think AC Milan fans? Snail is in the house, भाई. AC Milan fans know it. AC Milan fans, what do you think about Çalhanoğlu? गालियां आती मुंह से, गालियां. तो Çalhanoğlu ने बोला है ना AC Milan के अगेंस्ट. I know, great player right now, but after moving from AC Milan, he disrespected AC Milan. खेला तो इब्राहिमोविच भी था दोनों क्लब्स के लिए, खेला तो रोनाल्डो भी था दोनों क्लब्स के लिए, लेकिन कम ऑन, I don't like what he did, Çalhanoğlu. Ayush, I want to do, if you guys, support us, again, I can only request you always to kind of hit that bell icon on both the channels. Again, make sure that you have hit that, not always, देखें हाँ, bell icon on both the channels for all the notifications. Also, अगर आप लोग share कर सको Almighty Blues को, if you feel that Almighty Blues, Almighty Sports, and you feel a part of it, feel a part of the family, try and share it in your maybe friends, family, for people who are interested in WhatsApp groups or whatever you can. Again, when we put posts, when we put any post, be it Instagram, हमारे 2 Instagram accounts है guys. Again, थोड़ा सा मैं promote कर रहा हूँ while the match is one-sided. 2 Instagram accounts है, Twitter account है एक. तीनों के एड्रेसेस हमेशा रहते हैं नीचे बॉटम लाइन ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, हर एक डिस्क्रिप्शन में. प्लीज गिव अस अ फॉलो. इफ यू नोटिस एनी पोस्ट
All we're asking for is, don't just basically in your mind like it, hit that like button. Every little like helps. Again, requesting each and every one, be it our members, mods, or subscribers. The reason I might be sharing with you all certain content, not that I expect that, लेकिन I would be even more thankful, which I'm already. अगर आप लोग like दबाइए, our community posts on both the channels are not getting enough likes. एक डायरेक्टली मैं ब्रो टू ब्रो बात कर रहा हूँ. Our community posts, and I'm saying this literally on every stream, but ये clearly बोल रहा हूँ इस बार. Community posts on both the channels do not get enough likes, but they get a lot of views. So there's a difference. अगर आप likes करते हो, that YouTube promotes, तो उससे नोटिफिकेशन जाती है बाकी लोग को who are not subscribers, बाकी लोग को who are inactive subscribers. ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं बोल रहा हूँ. भाषण आई नो बोरिंग था, but that's how it is. कोई नहीं, that's my platform, so I just said it. Damn, I still remember the, yeah, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल. Again, इसी जगह था भाई, इसी जगह था मैं. I remember that day. 2011-12 by back-to-back years, I cannot never forget Pujin by two of my favorite years in terms of sporting experience as a fan. Yeah, 2011 India winning the World Cup, of course, cricket ka, or 2012 Chelsea winning the Champions League, bro. Right up there, right up there. In fact, 2010 we won the Premier League. So 2010, 2011, 2012, brilliant. No problem. Om will get back there. I've seen the documentary when Figo has returned to Camp Nou to play the league game. That was some environment in Camp Nou. बिल्कुल. Again, big up to anyone who's joining. But अभी लास्ट के कितने बचे? 3.5 minutes plus stoppage time. I hope stoppage time ज़्यादा जुड़ा है नहीं यार रेफरी, unless रेफरी को मजा आ रहा है लाजियो के लेने की. लेकिन let's see where we go. Matthias Tel, I think again sensational लगा था मुझे as a youngster last season. I don't know, मतलब again Tuchel is to blame. मतलब he's not been so settled under Tuchel. मुझे लगता है पैनिक ज्यादा करता है. मतलब I feel maybe वही है, कम मिनट्स मिल रहे. That's the only thing I can talk about Matthias Tel. Again Musiala, why is he playing 88 minutes? मैं खुद Tuchel को criticize कर रहा हूँ in a win, much needed win at that. But come on, why is Musiala playing 88 minutes? I don't get it. When you're winning 300 at home, aggregate 3-1. कौन जीतेगा यूसीएल? आयुष पूछ रहे. आई वुड लव टू बी सीइंग अ न्यू विनर, आयुष, इफ आई एम ऑनेस्ट. कौन बचे अभी? मतलब again Inter Milan has won it. They were finalists last time. As an AC Milan fan as well, I would never want Inter Milan to win it, but from a Serie A perspective I would love it. So two minds really. Having said that, to be honest na, Atletico Madrid might be far from the favorites, and of course हार ही जाए next week, ये eliminate हो जाए, probably will do. But in my personal opinion, जो back to back जो हुआ था ना रियल मैड्रिड के साथ में, as much as रियल मैड्रिड आर द गुड्स, अरे भाई का चैलेंज केन पर येलो कार्ड है भाई, डेफिनेटली. व्हाट रबिश टैकल वाज दैट? किसका? लुइस एल्बर्टो है क्या? कौन है ये टैकल जो किया बंदे को, केन को? What rubbish tackle was that, bro? Full frustration only, na? Clearly. Substitute है कटाल्डी. बट हाँ, क्या बोल रहा था मैं, भूल ही गया खुद ही. या अगेन केन एंड मुसियाला प्लेइंग. एक बंदा रहना चाहिए था, मैं बोलता एक बंदा नहीं रहता तो ठीक रहता, क्योंकि 2 goals इज नॉट सो सेफ आल्सो पुदिन. लेकिन दोनों को खिलाना, मतलब अभी केन हैज बीन टेकन ऑफ इन ऑलमोस्ट 90th minute यार. Conrad Leimer has come on, a midfielder who can play at the back as well. इतना ये बोल रहा था मैं, कौन सा टीम चाहते हो आप? मतलब realistically we all know it's going to be either Man City or Real Madrid. Let's be real about it. As much as हम बोलेंगे Inter Milan has an outside chance, Barca अगर injuries नहीं होती तो they would have had maybe just about, I don't know. But Arsenal तो मैं अभी भी नहीं बोलूंगा honestly. I don't see them winning. Let's be real. I might be wrong, और हो सकता है क्लिप बाद में आप लोग spread करो. It's okay. It'll help the views. Simple as that. I'm right now wanting that, but anyway, having said that, being a realist, I think I cannot see them winning. So, and do I want? Absolutely not. I'm okay with winning is, I'm Atletico Madrid, bro. Atletico Madrid, as much as Atletico Madrid will be out, because Atletico Madrid, I think they deserve a UCL. क्योंकि वो रियल मैड्रिड के साथ मतलब हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स ट्वाइस हुआ था यार. रिमेंबर
Even Chelsea had many heartbreaking moments in the mid 2000s. Many ghost goal बोल दो, Barca वाला match बोल दो 2009 का, of course finals in 2008, the John Terry and the Nicolas Anelka moment. Musiala subbed in the 90th minute, by the way, guys. Whew. But Bayern Munich had a heartbreak अपने साथ 2012 में, but next year they won it. Robin's goal. Um, yeah, I think Atletico Madrid. That's the only choice. नहीं, PSG नहीं यार. I don't want them to win it. भाई थोड़े बहुत क्लब्स के साथ बैंटर करना अच्छा लगता है, मच एज कोई दुश्मनी नहीं है. स्नेल एज एन आर्सेनल, एज एन एसी मिलान फैन, यू आर सेइंग आर्सेनल यू वुडंट माइंड. नहीं यार, आई वुड माइंड बिग टाइम. एक अच्छा बैंटर है भाई, यूरोप में घंटा जीता है. एज मच एज आर्सेनल फैन, सम ऑफ यू आई नो पर्सनली नो यू एंड लव यू, बट you know exactly at heart whether we love football in the fan channel for all to see, we are all not for Arsenal, and you're welcome though. लेकिन अब रियल के डिफेंडर्स आर बैक. कोटवा ने पोस्ट किया है, ही विल बी बैक इन क्वार्टर फाइनल्स. वाओ आयुष, दैट्स अपडेट. हाँ, you know what, I would be okay with this. Pudin, I'm okay with that. As much as Bayern भी बहुत जीती है, I don't know how many of you all know AC Milan का जो है record, number of Champions League won. So I don't want Bayern to kind of get ahead too much. Pudin, I don't know if you understand what I'm trying to say. Bayern and Liverpool over the years, I don't want them to win much because I don't see AC Milan winning in the near future. That's one reason. Maybe I don't want Bayern to win. I might be wrong. I know, थोड़ा selfish है, but that's the reason. लेकिन Tuchel probably, अगर he can shut up shop, entire media, everyone जो भूल गए literally what Thomas Tuchel was. Literally, I've forgotten. Again, he's not a world beater, world का best नहीं है. But to tell him that Tuchel is नहीं यार, come on. मतलब I've heard Manchester United fans saying नहीं, we don't want Tuchel. Seriously, he's a huge upgrade on Ten Hag, and I'm a Ten Hag fan. Thomas Tuchel is a huge upgrade on Ten Hag. Anyone here disagrees? Is there a single person who disagrees that Thomas Tuchel is an upgrade on Ten Hag? Ten Hag is not too bad in terms of tactics. Lekin come on. There, I've heard people say that we don't want Thomas Tuchel. I know reasons alag honge, but he's definitely an upgrade on Ten Hag. No two ways about it. But कोई नहीं, मैं चाहता नहीं हूँ कि वो जाए, लेकिन another English club. As it is, बहुत पेन था यार looking at Mourinho and Conte managing Spurs of all, and even Manchester United in case of Mourinho. तो बट इंटर तो काफी अंडर द रेडार रही. अब तो भाई काफी लोग कर रहे हैं बात इनफैक्ट ऑल ऑफ सडन, क्योंकि हम तो भाई घंटा जानते हैं सीरिया वॉचर्स. हम बोलते आ रहे 2 सीजन से, कोई सुना नहीं अपने को. ठीक है, कोई नहीं, सब लोग अभी आ रहा है और बाद में क्रेडिट अपने को नहीं मिलना है. क्रेडिट भी वो लोग ही ले जाएंगे, व्यूज भी वो लोग ही ले जाएंगे. बिग अप यार, हम तो घंटा जानते हैं, लेकिन हमें भैया बोलो साथ साथ में हमें देखो नहीं. चलो कोई नहीं. गोइंग बैक टू द क्रिप मोड गाइज. थोड़ा अगर रियल ट्रांजिशन पे अच्छा डिफेंड करे 100%, सिटी बीट कर देंगे. डॉन कार्लो मास्टर क्लास. The current Real Madrid side, considering that people have been out of injuries, do I see them beating Man City? Even there, people have been out of injuries. I don't. Animesh, good night बोल दिया भाई. जैसी मैंने बोला Tuchel upgraded Ten Hag पर, Animesh is like good night भैया. Animesh, भावना दिल पर मत लो, but I think probably it's not that. नींद आ रही है आपको as it is. खत्म हो रहा है मैच, last 30 seconds left. मेरा तो गोल फॉर रियल सोसिएडाड गाइस, कंग्रेचुलेशंस. एक कॉन्सोलेशन आया है, मैंने मिस कर दिया. 3-0 बायर्न को लाजियो के अगेंस्ट 3-1 एग्रीगेट, एंड Real Sociedad 1 PSG 4 aggregate. Looks like it there with stoppage time as well. किसने मारा भाई Real Sociedad का गोल? मिकेल मेरिनो ने मारा है, and he was the player of the first half. पुदिन ने बोला था. Fair enough. Again, remember वहां पर भी if I'm not wrong, PSG तो पूरा स्क्वाड यूज किए, लेकिन Tuchel is in the quarterfinals. Commiseration to Lazio, commiseration to Sarri, commiseration to Pedro, of course commiseration to entire team. कहीं ना कहीं they have had a bad season as well, but it is Harry Kane brace guys, and Thomas Muller, दोनों first goals में he had a say. कहीं ना कहीं that finished the tie, let's be real about it. और of course Lazio couldn't even get a goal at the Allianz Arena, और उससे होता है 3-1. Again I must say Thomas Muller भाई क्या जज्बा है इस एज में. That these are people, these are moments, these are matches where it motivates someone who's down, maybe a player, maybe a current, an ex-player, I don't know what.
At the end of the day, it is from a losing position that they've come. I know घर पर है, I know Bayern Munich against Lazio है, but Tuchel was under pressure. Tuchel had people returning from injuries. Tuchel had taken the risk of playing Eric Dyer and De Ligt. Big up to him. Yes, Kim Min-jae also wasn't 100% fit maybe. Fair enough. Upamecano bhi nahi tha. तो एक फास्ट मूवर wasn't there. So for a counter, they did well. Again, Kimmich को खेलना at right back. He could have played Konrad Laimer for all we know. वो खेला है in Bundesliga matches for people who watched it. Guerrero left back, not Alfonso Davis. So that means that maybe he's going, I don't know, but वो लोग आए late. Till that time it was over. Serge Gnabry getting some couple of minutes, it helps because he's coming back from injury. But let's be real. मैं अगर full time तक खेलता मुलर तो मैं तब मुलर को मैन ऑफ द मैच. But the fact is 2 goal तो केन को ही देना पड़ेगा मैन ऑफ द मैच unless you guys disagree. And of course Mbappe gets in the other game. Don't you all think so? By first of all, जो भी लोग आ रहे हैं ना, जो भी लोग आ रहे हैं, first of all, big up to you all. If in case you're not subscribed to both our channels, please consider subscribing. There's a lot of effort which goes into it. I know it's kind of people say like यार क्या पूछते रहते बार बार, लेकिन we genuinely deserve it. लाइक कर दीजिए, एक भी कंजूसी मत करिए. एक भी बंदा बंदी जो लाइक बटन नहीं दबा रहा है, प्लीज डीएम अस डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर. कैसे कर सकते हैं? लिंक्स बिलो एब्सोल्युटली. लेकिन कंग्रेचुलेशन टू बायर्न म्यूनिख. All of a sudden Tuchel has just 5 more matches and he can win a Champions League yet again. Just saying, it's easier said than done. But I don't remember when UCL round of 16 matches overall was so boring in recent years. Absolutely snail. I agree Tuchel is a better, but अब नींद आ रही है. No problem. Arsenal versus Porto would be interesting. Maybe, but again 1-0 Lazio type ही था वहां पर भी. तो don't be surprised if there's a proper coming back by Arsenal as well. City को आने तो they by the way Ancelotti have never lost twice to same team in competition. मेरा prediction सही था. Karan, congratulations to you as well. बिल्कुल. Eric Dyer extended contract till 2025. Bayern is crazy. Mbappe, Davis and Endrick Real can repeat. भाई साहब आयुष, मैंने शायद दिखाया था आयुष. I don't know if you have seen something. People I know, आप लोग बोलेगा really. Again congratulations basically to Mbappe to get those goals. लेकिन जब रियल में आ जाएगा, as much as I know कल वो नहीं है, but let's be real, वहां पर वो जीतने वाले without him. And जब आ जाएगा तो look at this man, look at this. That is going to be the Real Madrid forward line, Ayush. You know it as a Real Madrid fan. Lekin again, big up to everyone who's here. Man of the match, pretty sure Kane and Mbappe आज ले लेते हैं. Meanwhile, everyone who's here, do not forget, always a fan channel for all to see. No matter what, will be there. कल Almighty Blues में शायद करेंगे. Hopefully, we'll put up a shot even on Almighty Sports again very soon. By the way, we did put a great shot earlier on the day. So feedback दीजिएगा. Again, comment, like, as well as share in your WhatsApp groups as well as the Twitter. No matter what, love you guys. No matter what. चलो भाई, अभी के लिए इतना ही है. Good night and जल्द मिलते हैं. But चेल्सी का मैच हाँ मंडे को है, मंडे नाइट को है न्यूकासल के साथ. लेकिन वी कवर अदर थिंग्स एज वेल. आयुष, हम प्रीमियर लीग का प्रीव्यू करेंगे. हम IPL is coming close, the test match is coming, तो क्रिकेट का थोड़ा बहुत करेंगे इस वीक. और on this channel on Almighty Blues we will cover UCL किसने का उखाड़ा as well as tomorrow's Watchalong. ठीक है, तो ये that is the plan. That's it for now. Bye guys. Tuchel.